औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज का लाइव सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज हमारे साथ एक बहन है जिनके भी वॉवे में जॉब हुई है। उनसे बात करेंगे और फिर अबू बकर है, उनकी बूज एलन हैमिल्टन की जो प्रिपरेशन उसको कंटिन्यू करेंगे। आज लाइव सेशन में मैं सिर्फ ये दो काम करूंगा, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि फिर मुझे जो मेरा बड़ा सेशन है उसकी तैयारी करनी है सैटरडे के दिन। जो यूनिवर्सिटी का हमारा सेशन है हम उसमें लगे हुए हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, नए पोर्टल की तैयारी है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एक्रेडिटेशन पे काम हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये मैं ज़रूर बताते चलूँ कि ये सेशन लाइव है इस वक्त। आप यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर पे देख सकते हैं। आप हमारे जो स्ट्रीम का जो हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, आप उस पर भी देख सकते हैं, और आप उस पर भी stream.alnafi.com पे जाकर उसको लॉग इन करके देख सकते हैं। राइट, दैट इज अनदर बिगर थिंग जो हम इस वक्त कर रहे हैं। नाउ एक बात याद रखिएगा कि आपने कोई भी सवाल करने हैं तो आप इसको ज्वाइन कर लें, या फिर स्ट्रीम पे हैं तो आप वहां से पूछ सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताता चलूँ। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स कि जिस पे हम काम कर रहे हैं, और वो जो हमारा इस कमिंग जो वीकेंड को जो हमारा इवेंट है nafi.com/ अगर मैं इवेंट्स पे जाऊं, ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस इवेंट को आप ज़रूर ज्वाइन करें। जो लोग पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो इनविटेशन जाएगी जाएगी, और बाकी जो लोग हैं उनके पास भी इनविटेशन पहुंच जाएगी, मतलब कि जो शेयर जो पहले कर चुके हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट है, 20 अगस्त को हो रहा है पाकिस्तान के 9 बजे। इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रैक के बारे में बताएंगे, AR VR के ट्रैक के बारे में बताएंगे, एडवांसमेंट ट्रैक जो आ रहा है। और इसके अलावा हम आपको BSc और MSc डेवऑप्स की डिग्री के बारे में बताएंगे। ये चीज़ें बताई जाएंगी, और एक्रेडिटेशन का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर है, हम लोग किधर हैं, उस एक्रेडिटेशन प्रोसेस में क्या करना होता है उसके बारे में बताएंगे। एडमिशन आप कैसे ले सकते हैं, जो एडवांसमेंट ट्रैक उस डिग्री प्रोग्राम में कर रहा है उसको इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरने की ज़रूरत नहीं है, और वो सिर्फ अपनी फीस जमा कराए, आइल्स का स्कोर लेकर आए, तो वो एडमिशन करवा सकता है। सो दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसके ऊपर हम बात करेंगे, और वो तमाम चीज़ों के ऊपर हम सैटरडे के दिन 20 अगस्त को बात होगी। आज मेरे साथ जो है अक्सा बहन है। अक्सा बहन, आप अपना कैमरा इनेबल कर सकती हैं? इनको कोई वो कर सकता है? आप अपना कैमरा इनेबल कर सकती हैं यहाँ पर? इनको को-होस्ट बना सकते हैं ताकि कर सकें। हेलो जी अक्सा सर, बहन। मेरी वॉइस आ रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है जी। जी अक्सा बहन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बताइए आप कैसे वालेकुम आई सलाम। हमारे पास? आपने क्या किया, क्या पढ़ा? आई वुड लाइक टू गेट सम अंडरस्टैंडिंग। सर, इट्स नेसेसरी टू इनेबल नहीं वीडियो। नहीं, चले आप छोड़ दें, आप मत करें, आप अपना बताइए। ओके ठीक है, बताइए। सर, एक्चुअली मैंने अन्नाफी को 2019 के एंड में ज्वाइन किया था, जब मैं मास्टर कर रही थी। तो बिकॉज ऑफ स्टडी मैं फिर जस्ट ज्वाइन ही कर सकी, पर मैं अपनी फर्दर नाफे पे स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाई प्रॉपर जैसे पढ़ना चाहिए। तो फिर मेरा फाइनल ईयर आ गया और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स वगैरह आ गए, तो मैं अनाफे से टोटली हट गई थी। सो प्रॉपर जब मैंने अनाफे को पढ़ना शुरू किया है, अनाफे पे साइबर डिफेंस का ट्रैक लिया था मैंने फर्स्ट टाइम। और बल्कि 2 दफा मैंने बाय किया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उसे पढ़ नहीं पाई थी, तो फिर दोबारा से मुझे अगेन बाय करना पड़ा। वो मैंने 2020 के एंड से, आप कह लें कि दिसंबर से मैंने प्रॉपर पढ़ना शुरू किया। और 2022-1 जो है ना, वो प्रॉपरली मैंने कंसर्न किया कि जितने भी नाफे के कोर्सेज हैं वो सारे लिए। साइबर डिफेंस का ट्रैक मैंने 2 दफा कंप्लीट किया, क्योंकि बीच में फिर वैट का ट्रैक भी आ रहा था। तो उसके लिए फिर मैंने स्टे किया कि जब तक वो आ जाता है। तो जब वैट का ट्रैक आया तो फिर मैंने कर्जेस्टा के लिए अप्लाई किया था कि डेफिनेटली मैं तब उस फीस के लिए जो 65,000 थी मैं नहीं कर सकती थी पे। तो उसमें फिर मैंने उसकी को जो
2 पोर्शंस करके फिर मैंने उसकी फीस वगैरह का जो अरेंजमेंट किया। तो फाइनली इस तरह से 22 कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट राउंड अबाउट 2 ईयर जो है वो मुझे मैंने स्टडी किया है अन्नाफे पे। तो साइबर डिफेंस का ट्रैक मैंने 2 दफा रिपीट किया, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं स्टडी भी कंप्लीट कर चुकी थी, तब कोविड भी चल रहा था, मेरी कोई जॉब वगैरह तो नहीं हो रही थी। लेकिन मैं लैब्स वगैरह तो नाफे पे आ रही थी, लेकिन मैं उस टाइम करंटली अफोर्ड नहीं कर सकती थी, क्योंकि वैट में आपने ये जो ऑप्शन डाला था एक कर्ज हंसना का, ये बहुत बेस्ट था। सो दैट्स व्हाई यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी, और मैंने वैट को फॉलो किया। अभी करंटली मेरा वैट जो है वो उसमें डेटा साइंस का पार्ट जो है वो रहता है, और मेरी नेटवर्किंग की कुछ लैब्स भी अभी रहती हैं, और WSTG की भी थोड़ी सी रहती हैं। तो इस तरह से मैंने किया था। तो आपने भी हुआवे में जो जॉब कर रही है माशाल्लाह, आपका इंटरव्यू जी प्रोसेस कैसा था? सर, एक्चुअली हवावे में मैंने अप्लाई किया था आफ्टर जैसा मेरा इंटरव्यू था। ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं मुझे वहां पे अप्लाई किए हुए। 2 मंथ के बाद उनका पहले उनका इंटरव्यू हुआ था, थोड़ा सा हमारा शॉर्ट इंटरव्यू हुआ था, फिर उन्होंने थोड़ा सा डिटेल इंटरव्यू लिया, और उसके बाद फिर उनका एक काफी गैप रहा। मुझे लगा था कि नहीं होगी ना यहाँ पे जॉब, शायद उन्होंने सिलेक्शन वगैरह कर ली है। बट आफ्टर 2 मंथ उन्होंने दोबारा से मुझे कॉल की, और फिर उन्होंने मुझे अभी मेरी 15 अगस्त से मैंने ज्वाइनिंग की है हवावे पे। टाइम लगता है, बड़ी कंपनीज जी टाइम लेती हैं, फौरन से किसी का नहीं होता। जो बड़ी जी कंपनीज होती हैं उनके अंदर बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। तो आप हमेशा कभी हार नहीं मांगा करें कि बस मेरा हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता। तो माशाल्लाह, यानी कि फिर आप लग गई उसमें, आप अब आप वावे में काम कर रही हैं माशाल्लाह। तो आपको कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते, महीना, क्या हो गया? सर, नहीं, अभी मैंने 15 अगस्त को ज्वाइन किया है इसी मंथ की। तो कुछ अभी ही तो दिन हुए हैं हमारी आपको? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। एक्चुअली हवावे को ज्वाइन करने से पहले मैं बताऊंगी, यहाँ पे मैंने 2 जगह इंटर्नशिप किया है। एक मैंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग की 2 मंथ की इंटर्नशिप की थी, वो रिमोट थी। और मैंने एक और GRC की, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी GRC की मैंने इंटर्नशिप की थी ट्रिलियम पे, 2 मंथ की थी। वो भी मुझे ऑफर कर रहे थे। मैंने जैसे बताया ना कि 3 ऑफर इस मंथ में मैंने अचीव किए हैं, या तो मुझे कोई ऑफर ही नहीं मिल रही थी। दिसंबर से एक्चुअली मैंने अप्लाई करना शुरू किया था, दिसंबर 22 से। आपको याद होगा सर, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा अफिनिटी पे, मैंने आपने मुझे उसकी प्रिपरेशन करवाई थी, बट जी वो नहीं जी। हुआ था। जी, हाँ हाँ। क्योंकि मेरी कौन सी कंपनी कम्युनिकेशन थी, कौन सी कंपनी थी वो? अफिनिटी अफिनिटी इन्फिनिटी। हाँ अच्छा। जी। हाँ, तो वो वो क्योंकि मेरी पीसीआई डीएसएस का कम्युनिकेशन ना, स्किल्स पीसीआई नहीं थी। डीएसएस का। हाँ जी। तो असल में उसमें पीसीआई डीएसएस में आपको तो काम आता था, जो आपसे इंटरव्यू ले रहे थे उसको नहीं पता था। ये भी होता है। ठीक है। तो सर वो हाँ, बोलिए बोलिए। सर उसमें मेरी कम्युनिकेशन स्किल का भी था, क्योंकि मेरा वो लाइफ में फर्स्ट इंटरव्यू था, तो मैंने वैसे नहीं दे पाई जैसे मुझे देना चाहिए था। तो जैसे मतलब दिसंबर से ऑनवर्ड फिर मैंने कंटिन्यू किया है, इंटरव्यू 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 बहुत ज्यादा दिए हैं। तो उससे एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, मुझे पता चल गया बात किस तरह से करनी है, एक्सप्लेन किस तरह से करना है टू द पॉइंट आंसर को, जो इंटरव्यू लेने वाला है वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे। और कम्युनिकेशन के जो गैप था ना, वो भी अगेन एंड अगेन जब इंटरव्यू देते हो ना, तो वो भी फिल हो जाता है इससे। तो ये इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। सही 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 सही। हाँ चले, जी। अच्छी बात है माशाल्लाह, यानी कि आप लग गई माशाल्लाह। अब आप यानी कि इंडस्ट्री में आ गई हैं आप, राइट? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कैसा इस कैसा लग रहा है आपको? वावे में काम करते हुए कैसा लग रहा है? कैसी कंपनी है? अभी तो आपका प्रोबेशन, मतलब कि ट्रेनिंग चल रही होगी, कुछ चल रहा होगा। सब अभी तो हमें प्रॉपर वो अपनी डोमेन में नहीं लेके गए, अभी तो जनरल वो ट्रेनिंग दे रहे हैं हमें, ओरिएंटेशन चल रहा है। और हमारा अभी हमारी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होगी वो प्रॉपर संडे से हमारी डोमेन की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। लेकिन उन्होंने छोट मारी, एक मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने बेस्ड ऑन जो मेरे रेज्यूमे था और जो थोड़ा सा मैंने एक्सपीरियंस लिखा था GRC साइड का, ऑन द, उन्होंने मुझे कहा है कि आपको हम एज एन आईएसओ ISMS ऑडिट लीडर आपको लेंगे, ऐसे 27001 ऑडिट लीडर। तो डेफिनेटली वो आईएसओ सर्टिफाइड हैं। तो उन्होंने कहा है कि आपने हमें ऑन संडे से आप हमारे साथ मीटिंग करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आपको चाहिए होगी, और फिर आपने ऑडिट एज एन आईएसओ 27001 लीड इम्प्लीमेंटर ऑडिटर आपने हमारे साथ काम करना है। तो इस तरह से है। चले माशाल्लाह, अच्छी बात है, अच्छी बात है। जी। चले बहन, अल्लाह ताला आपकी आसानी फरमाए। एक, आमीन। आप कहाँ रहती हैं? लाहौर में रहती हैं, किधर रहती हैं आप? सर, एक्चुअली मैं रहीमजर खान से हूँ, तो अभी जॉब के लिए मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जी आप ना वो भेजिएगा, अपना एक टेस्टिमोनियल भेजिएगा, ताकि हम देखें।
मतलब जी कि ना इंशाल्लाह, ठीक है। और यस अगर यस आप पर्दा करती हैं तो आप अपने आप को नकाब में जो भी जिस तरह से भी आप करती हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है ना, वट एवर वर्क्स ओके फॉर यू इंशाल्लाह। आपको जो है ना हमारी जो टीम है मार्केटिंग वाली वो आपसे रब्ता करेगी। हो सकता है कि अगर आप इस्लामाबाद में तो आपके पास आ भी जाएं, आपकी वीडियो भी बना लें, वो आपको बता देंगे। और सही वो ठीक है इंशाल्लाह। बट माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला आपके लिए थैंक आसानी यू सर। फरमाए। आप लग सर गई हैं। इट्स मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप जी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। जी सर वो एक बड़ी कंपनी है, उनके पास जी सर अभी भी जो है ना मतलब कि इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। और इनका जो रेवेन्यू है वो बिलियंस ऑफ उसमें डॉलर्स में है। और ये चाइना का सबसे बड़ा प्रोवाइडर है, राइट। चाइना इटसेल्फ अगर दुनिया को चाइना से काट दिया जाए तो चाइना फिर भी उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो चल सकती है, राइट। बिकॉज इनका सिर्फ इसी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट, यानी कि अगर आप इनकी ऑपरेटिंग इनकम इनकम सब कुछ देखें तो जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट $100 बिलियन पे आता है, ठीक है ना। सो इट्स अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत है आपकी ग्रोथ की, सब चीज़ों की। ये इवन दो इनको यूएसए ने फंसाया है पूरा करके, इनकी अपनी भी गलतियां हैं बहुत सारी, ठीक है। यूएसए अब किसी को ऊपर जाते हुए देख नहीं सकता, तो इसलिए उसकी वजह से भी मसला है। लेकिन दे आर स्टिल वेरी बिग इन अफ्रीका, दे आर ह्यूज इन इन अदर यूरोपियन कंट्रीज एज वेल। तो अभी भी ये लोग जो है फॉरेन एक्सपेंशन में बहुत काम कर रहे हैं। तो सब सहारन में, मिडल ईस्ट के अंदर, और इवन के आप यूरोप के अंदर भी दे हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ना। और मैं आपको यही कहूंगा कि आप इसमें काम करें अच्छे तरीके से। और इनका बहुत सारा काम जो है ना अच्छा वो बिग डेटा पे भी हो रहा है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर भी है। और क्या नाम है, नैरो बैंड आईओटी, यानी कि जो सिटी अवेयर नेटवर्क्स होते हैं ना, जो शहरों में लगते हैं, वो भी। तो उसकी साइबर सिक्योरिटी, उसकी जीआरसी, उसकी कंप्लायंस, उसके ऊपर भी बहुत काम है। तो आप एक ऐसी कंपनी में घुसी हैं कि जो जी सर जो ना मलेशिया, इंडोनेशिया, आउटसाइड ऑफ जी जी चाइना, वो हर जगह इंटर हो रहे हैं। सो दिस इज अ ग्रेट कंपनी टू वर्क फॉर, अच्छी कंपनी है। और अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत होंगी। और इनका पूरा क्लाउड का बिजनेस भी है, इनकी अपनी ना पूरी इनकी पूरा अपना क्लाउड का बिजनेस, क्योंकि इनके बहुत सारे डेटा सेंटर्स हैं, ठीक है। इक्विपमेंट की कमी तो है नहीं इनके पास। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जो है ना अपने आप को अपस्केल करें मजीद, ठीक है। चलो आपने वुमेन एडवांस में ट्रैक कर लिए, सब कुछ कर लिया, अब आप डेवऑप्स पे जरूर जाएं। और अगर आपने ये सारा काम सीखा, सब कुछ किया ना, तो फिर आप जी सर जो है ना यूके भी जा सकेंगे मास्टर्स करने। अब मास्टर्स किस में किया आपने, किस में कर रही थी आप? सर मैंने कंप्यूटर साइंस में किया है। कहाँ से? मैंने इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर से। आईयूब की इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से काफी बच्चे आ रहे हैं, जो जी हमारे, आप दूसरी चौथी पांचवी है जिसकी जॉब हुई है। एक और भी लड़का था जो बीच में आया हुआ था, उसकी भी जॉब हुई है। तो माशाल्लाह अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए, अल्लाह ताला खैर के मामला जी फरमाए इंशाल्लाह, तो ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर नाफे इतनी मतलब चीपेस्ट कोर्सेज ना प्रोवाइड करता तो डेफिनेटली मैं नहीं कर सकती थी जितने मैंने ये देखें, ये एक दुआ है, थैंक यू एक सो दुआ मच है, सर। एक दुआ है, उसका उसका वो है, अल्हम्दुलिल्लाह लजी बिनेमती तुतिम सालिहात, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह फ्रॉम whom गुड थिंग्स आर accomplished। अगर हम ये बोले ना, अन्नाफे अन्नाफे का कोई कमाल नहीं जी है। जो है ना काम है वो अल्लाह का है, ये सबसे बड़ी चीज है इस्लाम के अंदर, ठीक है ना। दिस इज तौहीद, ठीक है ना। और यही चीज जो है ना अल्लाह ताला को पसंद है कि भाई सब एट्रीब्यूशन जो है ना वो अल्लाह की तरफ से, ठीक है। यानी कि तमाम कामियां, यानी कि उसका तर्जुमा इस तरह से, ऑल प्रेजेस बिलोंग्स टू अल्लाह फ्रॉम whom गुड थिंग्स आर accomplished, यानी सब तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह लजी बिनिअमती तुतिम्मु सालिहात। तो सब तारीफें अल्लाह के लिए जिसकी वजह से कामयाबी मिलती है। तो आपको जो कामयाबी मिली है वो अल्लाह की तरफ से मिली है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। हाँ, अल्लाह ने हमें खड़ा कर दिया और अल्लाह ने हमें इस्तेमाल कर दिया ना। आपने आईयूबी से पढ़ा, आपने आईयूबी से क्या पढ़ा था, उन्होंने कुछ आपको पढ़ाया कि जो जॉब के अंदर आपको नो नो ये सर ये सबसे बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप आईयूबी में जाइए और बोलें कि भाई ये जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जॉब मार्केट में यहाँ, ये यूनिवर्सिटी वाले यहाँ पढ़ा रहे हैं, जॉब मार्केट यहाँ खड़ी है, तो ये जो बीच का गैप है ये मरवा देगा तुम लोगों को। तो आईयूबी को जाके बोलें कि भाई इसका इसका हल यही है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे ये है, ये आपको पूरा हैंड्स ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हैंड्स ऑन जॉब डिस्क्रिप्शन कोई पढ़ा ही नहीं रहा। अभी आपने डेवऑप्स का ट्रैक जो है ना, इसकी लैब्स नहीं देखी। अभी आपने वो तो काम तो बच्चे कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी लैब्स जो नए पोर्टल पे आएंगी, अभी आपने एआई की लैब्स नहीं देखी।
ठीक है ना। अभी आपने ब्लॉकचेन की लैब्स नहीं देखी, तो ये इतना सारा काम है कि जब आप वो देखेंगे ना तो आप बोलेंगे, क्योंकि हमने आपको पूरे पूरे प्रोजेक्ट्स करा के दे दिया है, अब आप लोगों को अपनी कंपनीज बनाना है, कुछ भी करना आप लोग कर, इस काबिल है कि आप लोग कर सकेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एडवांसमेंट ट्रैक बिल्कुल अलग है, इतनी सारी चीजें हैं, ठीक है ना। साइबर डिफेंस का एडवांसमेंट ट्रैक अलग है, उसमें हम लोग पूरा इलास्टिक सर्च, स्प्लंक, ठीक है ना, वाजू और मुख्तलिफ जो दूसरे पूरा उनकी किबाना, ग्रिफाना, हर चीज हम पढ़ा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सारी लैब्स हैं, लैब्स ही लैब्स हैं, आप यानी कि हैंड्स ऑन काम कर रहे होंगे, मगर वो सारे हमारे एडवांसमेंट ट्रैक्स में फैल गई हैं, राइट। तो जैसे जैसे आप लग गई ना अब, तो आप अपने आप को जी मजीद अपग्रेड करें ताकि आप आगे बढ़ती चली जाएं। तो वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक की जो है ना, आप 7वीं 8वीं बंदी हैं जिन्होंने आके हमें बताया कि मेरी जॉब हो गई। बाकी सब की जॉब हो जाती है, बताते नहीं है, आगे पीछे लग जाते हैं, ठीक है। तो माशाल्लाह वेरी हैप्पी। एक नादिया नाजिम है, एक और उनके साथ जो आई थी यूएई से हैं, एक आप हैं, सुंदस लतीफ हैं, मुझे काफी सारे नाम याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन्होंने मुझसे बात की, ठीक है। अंदलीब हैं, मुख्तलिफ जो लोग हैं, तो मुझे उनके सब बहनों के नाम याद हैं कि भाई कौन कौन किधर कहाँ इसका काम लगा है ना। तो माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस आप अल्लाह से थैंक यू दुआ सर। करें, अल्लाह ताला में कामयाबी अता फरमाए, और आमीन अल्लाह ताला इसी इंशाल्लाह। तरह आप लोगों को, हम सबको आगे लेके जाए इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। सर, सर आई जी हैव जी बोलिए। क्वेश्चन है। जब मुझे एज एन आईएसएमएस लीड ऑडिटर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? हवावे ऑलरेडी आईएसओ सर्टिफाइड है, तो अगर कैसे वो मतलब सर्टिफाइड है कि तो बन आपको, जी आप उनसे बोले कि जो सर्टिफिकेशन है ना, उसके जो जी लास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट्स, एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट्स, रिस्क असेसमेंट्स जो हमने की हैं, बाहर से करवाई, वो आप सब मुझे दे दें। जी आपके जी पास मेरा नंबर है, आप उस पर मुझसे रब्ता कर सकती हैं, ठीक है। मुझे बता सकती हैं कि भाई ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, मैं आपको उसमें गाइड करता हूँ, जी सर। ठीक है। और आप कभी भी ओके। यहाँ पर आकर पूछ सकती हैं, तो मैं आपको उसमें गाइडेंस दे सकता हूँ। आपको स्पेसिफिक कोई चीज़ बताने की जरूरत नहीं है, और अगर बहुत ही सेंसिटिव उसके डॉक्यूमेंट्स से सब कुछ है, तो आप मुझसे फ़ोन जी करके, मैं आप कंसल्टिंग ले सकती हैं, मैं आपको बता दूंगा उसमें किस तरह जी क्या सर। करना है, ठीक ओके, है। थैंक यू। जी इंशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जी क्या नाम है, अबू बकर, कहाँ हो भाई तुम? I'm here. So, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तुमने मुझे सुबह सुबह, मैंने तुम्हें सुबह सुबह 4 बजे, 4:30 बजे मैसेज किया था, पढ़ा था तुमने? जी। हाँ, ठीक है। यू मेंशन कि भाई तुम्हें चीजें याद नहीं होती, ठीक है। सो चीजें इस तरह से याद होंगी, अगर तुम जो ना जहाँ पर लोग अगर ना लोग, तुम लोगों को देखो कि लोग लोगों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। हम्म। सो मेरे एक कजन थे, उनका नाम मेजर मुश्ताक हुसैन अफरीदी था, उनको शहीद कर दिया था कराची में, ठीक है। तो वो उनके ऑफिस में उनका स्कूल है एजिसन स्कूल, जहाँ से मैंने पढ़ा है, ठीक है ना। जी। तो उनके स्कूल, उनकी क्लास में एक ना उनके ऑफिस में एक चीज लगी हुई थी, ठीक है ना, स्मॉल माइंड डिस्कस पीपल, ठीक है ना, एंड बिग माइंड्स डिस्कस आइडियाज, ठीक है। पता नहीं किसकी ये बात है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जब तुम्हारा मैसेज पढ़ा ना मैंने, तो मैंने तुम्हें सुबह सुबह 4:50 में, मैं फजर के लिए उठा हुआ था, तो उस टाइम पे मेरा फोन बंद होता है, तो मैं 4:45 बजे मेरा फोन खुलता है, उस टाइम पहले फोकस जो है ना, स्लीप, वो क्या नाम है, प्रेयर फोकस का एक वो लगा हुआ था, ठीक है। जी। वो चीज़ नहीं खुलती, तो मैंने तुम्हें मैसेज किया कि भाई देखो, तुम परेशान नहीं हो, और मैं तुम्हारा इसका सवाल का जवाब दूंगा। तो मैं देखो, जवाब ये है कि अगर तुम कहीं भी किसी महफिल में जाओ, या घर के अंदर कहीं पर भी, लोग लोगों को डिस्कस कर रहे हैं, यार वो ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा है, वैसा, वहां से उठ जाओ। पहले बोले ये करना गलत है, अल्लाह को, अल्लाह उसके रसूल को पसंद नहीं है, और वहां से उठ जाओ, पहला काम। दूसरा काम तुम ये करो कि ना, रोज आना तुमने 10 से 15 मिनट निकाल कर, अगर तुम बहुत ही मिनिमम है, ये बहुत ज्यादा मिनिमम है, ठीक है ना, तुम कुरान को पढ़ो, ठीक है। और इस तरह से पढ़ो कि जो है ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी पढ़ने के लिए, ठीक है, कि तुम्हारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन और सब चीजें आ जाएंगी। यानी कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे ना, वो 10 साल तक सूरह बकरा पढ़ते रहे, और अपने बच्चों को याद कराते रहे, कि कहा कि जब तक इसकी पूरी पूरी इम्प्लीमेंटेशन मेरी जिंदगी में नहीं आ जाएगी, मैं आगे नहीं पढ़ूंगा। सो ही केप्ट ऑन डूइंग इट, ठीक है ना। Right. तो ठीक है ना। सो जी। रीड 1 आया और 2 आया, रीड इट, रीड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, एंड आई कैन टेल यू कि तुम्हें किसको पढ़ना चाहिए। सैयद कुतुब की तफसीर बहुत, फी दलाल कुरान बड़ी जबरदस्त है। तुम जो है ना, डॉक्टर इसार अहमद की तफसीर पढ़ सकते हो। ये दो तफसीर ऐसी हैं कि जो वाकई में बहुत ही ज्यादा जो है ना,
जय्यद हैं इस दौर के हिसाब से. So that will give you something to ponder upon. Secondly, जो ना तुम्हें अपनी जो ना जो मैंने नया वीडियो बनाई है उसमें मैंने उसको बहुत दफा बनाया किया. अब जो मैंने इसमें बनाया ना तो उसमें मैंने लिखा है कि इन अ गिवन डे तुम किस तरह पढ़ सकते हो. अगर तुम लोग काम कर रहे हो तो तुम्हें कैसे पढ़ना है, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है. उसमें मैंने एक टेंटेटिव टाइमलाइन तुमको दी है. ये टेंटेटिव टाइमलाइन मेरा है, ठीक है. फर्क इसमें इतना है कि यहाँ पर मैं रात को 10 बजे सोता हूँ क्योंकि ईशा जल्दी हो रही है, ठीक है. 10:15 10:30 तक सो जाता हूँ मैं और मेरी आंख खुलती है 3:30 बजे, ठीक है. तो दैट इज माई स्लीप टाइम, ठीक है ना. मैं वो स्लीप टाइम किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है, वो कम है. मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि तुम ना 10 बजे सो जाओ. ईशा कितने बजे हो रही है तुम्हारे पास? About 10, yeah, around same, almost 10 राइट. o'clock. 10 बजे हो रही है तो तुम 10:15 तक 10:30 तक बजे के तुम की नमाज पढ़ के 10:30 तक 10:30 यू शुड बी इन द बेड. Okay. ठीक है ना, यू शुड बी इन द बेड. उसके बाद तुम उठोगे, यू शुड वेक अप, ठीक है ना, प्रिसाइसली एट 4:30 पे तुम उठ जाओ. मैक्सिमम 5, ठीक है ना, बिकॉज 4:45 पे 4:50 पे द फजर टाइम स्टार्ट्स, राइट. Yes. 55 पे, ठीक है ना. सो मैक्सिमम यू शुड बी अप बाय 5. सो 10 11 12 1 2 3 4, ठीक है ना, और 5. अगर तुम 5 बजे 4:30 तक सोते हो, दैट्स a good 6.5 hours. If you sleep till 5, that's good 7 hours. You should not sleep more than 7 hours. How many hours are you sleeping right now? I don't have a time. It's random. So you have to fix the time. You know the salah, there is a time for salah, right? Allah likes consistency and perfection. One of the names of Allah is Al-Musawwir, the artist. ठीक है ना? Well, you know, in all the praises of Allah, जितनी अल्लाह की तारीफें हैं, Subhanallah wa bihamdihi, you know what does that mean? How perfect Allah is. Subhanallah al-Azim, and we praise him. So Allah is perfection, ठीक है ना. So Allah Ta'ala ने perfection, तो आपको and everything जो पूरी universe है उसमें जितनी चीजें हैं, they are going through a set time, ठीक है. तुम देखोगे यहाँ तुम्हारे you know in your neighborhood, of course तुम्हारे पास ना वहाँ मुख्तलिफ कॉकेशियंस रहते होंगे, दूसरे लोग रहते होंगे, राइट, नॉन मुस्लिम्स, राइट, इन यूएस. तुम उनको देखोगे, दे स्लीप एट, जितने भी गोरे हैं कितने बजे सो जाते हैं वो रात को? 8 o'clock. 8 o'clock. 8 बजे सारे गोरे सो जाते हैं, ठीक है. ये मेरे मोहल्ले की बात है, ठीक है ना. 8 बजे मैं बाहर खड़ा होऊंगा ना, किसी को नहीं, कोई नजर नहीं आएगा, उनके बच्चे भी गायब. That's true. Why? So this is the reason they are successful. And you know what time have you ever woke up like in the morning and check like what lights are on? 5 o'clock, 4:30, 5 o'clock, every light is on in the jo gore jo ठीक है ना. They wake up, they're early to bed, early to rise. That is why they are successful. तुम गालियां देते रहो अमेरिका को, हम सब गालियां देंगे, आप मुसलमान बहुत ज्यादा बुरा भला कहते हैं. भाई अपने आप को देखो, हमने सुन्नत छोड़ दी है, उन्होंने सुन्नत पकड़ ली है वक्त की, ठीक है ना. सो दे स्लीप ऑन टाइम, दे वेक अप ऑन टाइम, दे डू एवरीथिंग ऑन टाइम, ठीक है ना. अवर लाइफ्स, जो मुसलमानों की लाइफ है, इट्स ऑल हैपहैज़र्ड, फैली भी है, इधर भी उधर भी, आगे भी पीछे भी, फिल्में देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, चाय वाले होटल में. तुम किसी गोरे को देखा है चाय वाले होटल में बैठे हुए? नहीं. तुम यू वर बोर्न इन स्टेट्स, राइट, तुम वहीं पैदा हुए थे ना. तुमने किसी गोरे को देखा? Upstate New York, yes. Upstate New York, right? तुमने upstate New York में Italians भरे हुए सारे. It's all Italians. Oh, I don't know. I was raised in Maryland. Oh, you were raised in Maryland, okay. So in Maryland, like सारे वहाँ पर देखो, this is the difference between जो successful हैं और जो unsuccessful हैं. अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दोज़ख में majority जो लोग हैं ना, they are there for procrastination. Procrastination क्या है? Laziness, ठीक है ना, वक्त की कदर नहीं करना. in the Quran, the surah, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. अल्लाह फरमा रहे हैं, कसम है वक्त की, अल्लाह ताला ने कसम उठाई है वक्त की कि भाई ये वक्त, मैं अल्लाह ताला, ये कोई वक्त जो है ना अल्लाह की किताब है. अल्लाह इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, ठीक है. इन जन्नत देयर इज नो टाइम, गॉन.
Time is here because time is eroding our existence. Time जो है ना हमें खा रहा है. It is eating our existence because we are getting old. You see this? ठीक है ना? And we will die. ठीक है ना? But in Jannah and or in hellfire, there is no, everyone will stay there. Right? So time is a creation of Allah. ठीक है ना? Okay. Time is a creation of Allah. And it is subversive to Allah. It is submissive to Allah. ठीक है ना? अल्लाह ताला कह रहे हैं, अल्लाह ताला ने टाइम की कसम उठाई. अल्लाह ताला ने जितनी कुरान में जितनी चीजों की कसम उठाई है ना, if you pay attention to it, if a person pays attention to it, he will say La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. That is enough for him. So मैं तुम्हें मशवरा दे रहा हूँ कि when you if you do this, ठीक है ना, your memory and everything will improve. Every single thing will improve. I mean, I'm not going to say कि यार 10 बादाम खाओ 14 बादाम खाओ. नहीं यार, don't do this. ठीक है ना? वो मेरी वालदा जो है ना रोजाना मेरे लिए बादाम निकाल के रखती हैं. ठीक है ना, भिगो के रखती हैं कि खा लो, मेरा बेटा खाएगा ये वो. सुबह सुबह मेरे साथ नमाज में उठी होती है, ताजुद में उठती है मेरे साथ. ठीक है, पूरा घर सो रहा होता है. बाबा मेरे फजर में उठते हैं, कभी उठते हैं कभी नहीं उठते ताजुद में. ठीक है, मेरी माँ मेरे साथ उठती है. ठीक है ना? एंड शी हैज बीन लाइक दिस. शी पुट मी ऑन दिस रूटीन. शी वाज द वन. ठीक है ना? व्हाट आई एम टुडे इज बिकॉज ऑफ माय मदर. राइट? ठीक है. सो तुम्हें ये करना है. So you have to sleep on time, you have to wake up on time. So in the new video, how to read and how to retain information, I have mentioned all of these things. You know, time in a given day, 24 hours, how much time you should sleep from 10 p.m. till 4:30 p.m. 4:30 a.m. That's good. 7.5 hours. It gives you good amount of sleep. ठीक है ना? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4.5. I mean, it gives you good, like 6.5 to 7 hours good sleep. ठीक है? उसके बाद first study slot in a given day, 5 a.m. till 6:30 a.m. If you pray फजर पढ़ो, पढ़ने बैठ जाओ. बच्चे तुम्हारे सो रहे हैं, तुम्हारा छोटा सा बेटा है सो रहा होगा, बेटी है सो रही होगी. ठीक है, तुम अपना बैठ के पढ़ने बैठ जाओ, तो मसला ही नहीं. अपना बैठ के काम करो. That is your prime time. उसको करने से पहले ना जस्ट रीड. यहाँ अब ये सब के लिए मैंने बना, नॉन मुस्लिम मुस्लिम सब फॉलो कर रहे हैं, तो वहां पर मैं ये नहीं लिख सकता कि कुरान पढ़ो. ठीक है ना? तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि उसको करने से पहले आफ्टर फजर सला recite 10 ayahs. This is on the dashboard? No, this is not well, the video will be on the dashboard, yes. Okay. And the video will be available on YouTube as well. ठीक है ना? Okay. But I'm not mentioning that. If Muslims want to see a Muslim version, I can share that as well. ठीक है ना? So that is one thing you have to do. So ठीक है, ये चीज करना बहुत ज्यादा जरूरी है. Take care of your health, take care of your diet. I run 1 to 2 miles every day on a treadmill. I train. If someone asks me my schedule, I train every day, basically for 15 to 30 minutes of weight training as well. ठीक है ना? And running separately treadmill. And alternate days मैं एक दिन treadmill करता हूँ, एक दिन मैं cycling करता हूँ. ठीक है ना? बल्कि मेरा जिम तो मेरे साथ ही यहीं पर होता है. ठीक है ना? So if I have to show you, you can just see it here like this. See like this. This is my gym. Oh, mashallah. Right? So this is the whole. I have the whole. Everything is here. Alhamdulillah. Right? So these are TRX bands and everything. I do it like my apna. This is the only reason I'm fit. Right? My chest is 45. Alhamdulillah. My waist is 22. ठीक है? So alhamdulillah. I mean, you have to take care of your health. अगर सेहत का ख्याल नहीं करोगे, you're gone. ठीक है ना? Because Allah is going to ask you, what did you do with your youth? क्या किया जवानी में भाई तुमने? So Allah is going to ask you. So ये चीज तुमने करनी है. ठीक है? Stop watching television. ठीक है? Television देखना छोड़ दो. ठीक है? Fox News, CNN, this. No. Just read a news. I don't do any of that. ठीक है? Just read a newspaper. Yeah. Catch up. What I do is I catch up on Reuters. There's an app, Reuters app in my phone, and I will just listen to Reuters what is happening. ठीक है ना? While I'm making my tea, जब मैं सुबह अपनी काली चाय बनाता हूँ, this is black tea, I'm drinking black tea. ठीक है ना? सिर्फ काली टी बैग डाला, पानी डाला, उसमें निकाला, बस ये मेरी चाय होती है. और मेरे साथ उसके साथ मेरे नाश्ता ये होता है कि I eat either 1 ajwa or 3 ajwas, maximum 5 ajwas. In a given day, when I'm very happy, I will eat 5 ajwas. Otherwise, I don't. ठीक है ना? So one of my students sent me almost 40 pounds of ajwa from Saudi Arabia. Wow. Right. So when the guy came, the UPS guy said, like, what is this? I mean, I don't understand. Why is this so heavy? This is a big box, a solid box. I don't know. So I opened it in front of him. ठीक है ना?
और पता चला उसमें सारी खजूर थी। तो मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला किसने भेजी? उसने कहा मैंने भेजी। मैंने कहा भाई क्यों भेजी तुमने यार? ठीक है, तो उसने कहा नहीं आपने कहा था बजवा खाते हैं, यहाँ बहुत महंगी पड़ती है। तो उसने कहा, मैंने कहा आपको भिजा दूं कि मैं सस्ती पड़ती है? मैंने कहा अच्छा जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है ना। हिज नेम इज लियाकत, सो ही सेंट मी दैट। तो उसने मुझे पूरा भेजा। मदीना मुनव्वरा में वहीं पर ही उनके डेटा सेंटर, ही इज माय स्टूडेंट, ही वर्क्स इन मदीना मुनव्वरा डेटा सेंटर. So the whole city of Medina, they have a SOC, Security Operations Center. So they're managing all the things in Medina, right? Okay. As relates to IT infrastructure, because it's a big IT infrastructure. Lights on, ये सब चीजें सब कुछ ना. So that's one thing I've mentioned. And then मैंने mention किया है कि 5 a.m. to 6:30 a.m. में watching videos and doing labs. That's the prime time. 1.5 hours, good enough. Alhamdulillah. Try to listen to the lectures throughout the day while working or traveling or while on breaks. So from 7 a.m., if you start your work at 7 a.m. and you finish at 6 p.m., still you can squeeze out 2 to 3 hours. 1 hour your lunchtime and another 2 hours or 1 to 2 hours while working something, because you won't be in a meeting all the day, right? Throughout the day. So you can listen to the lectures. You can keep on, even if they're saying, see this, see that, just listen to the lectures. Just listen. But when it comes to practicing that, you can practice it as well. Later on. And then I've mentioned that after 6 p.m., this is for those who are working full-time or studying college and or at a university. मैंने लिखा है. For students, it's a different one. और किसको दिन में कितने टाइम लगाना है, कितना नहीं लगाना. So this way, you can study easily. जब तुम घर आ जाओ, ठीक है, फैमिली के साथ टाइम गुजारो, सब कुछ खा पी लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है ना, everything is done. खाना वाना जल्दी खा लो, ठीक है ना. From 9 to 10, after Maghrib Salah till Isha Salah, ठीक है ना, do again a quick round of study. So that's another 1 hour. Okay? So in a given day, even if someone is working full time, अगर तुम सब लोग full time काम करते हो, जैसे वो अक्सा बहन है काम कर रही हैं, तुम लोग सब full time काम करते हो, सब कुछ करते हो, you can still study, ठीक है ना, easily, ठीक है, easily study at least 4 hours a day. 24 hours a day हैं, okay? उसमें तुम 4 hours यहाँ लगा रहे हो. And all of this, I'm asking you to spend at least specific time of 30 minutes or 15 minutes with the Quran. Build your relationship with the Quran, because this is going to come on the day of judgment. Right. For your aid. There's nothing else except our deeds and the shifa of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But we won't be able to get the shifa if we don't know who he is, what he did, were we following his sunnah or not. I mean, it's not, हम अल्लाह को बेवकूफ नहीं बना सकते कि जिंदगी भर सारे काम गलत करते रहे. बच्चे बोलते हैं ना, लड़के बोलते हैं, मेरे दोस्त बोलते हैं, यार सारे काम गलत करो, बुढ़ापे में आके ना हम तौबा कर लेंगे, मस्जिद में बैठ जाएंगे, अल्लाह माफ कर देगा. मैंने कहा यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट अल्लाह. मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट अल्लाह. व्हाट आर यू सेइंग? They were joking. I said, you're plotting against Allah. This is a plot against Allah. I mean, just think about it, right? So they became serious. मैंने कहा नहीं यार हम तो मजाक करते. मैंने कहा but तुम कह रहे हो मजाक करते, लेकिन तुम लोग यही काम कर रहे हो. ठीक है? तो यही, this is what they're doing. So even being busy, तुम 4 hours निकाल सकोगे. And when you start doing this, then you will see कि तुम्हारे पास बहुत time तुम्हें मिल जाएगा. You will be able to take out the time. ठीक है? So ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, you know, follow this inshallah and you will be successful. ठीक है ना, ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा है, ठीक है ना, follow this. And can you also share that video or information you? I'm going to release the video because I made so many versions of the videos, right? Okay. In the end, I realized that this video should also have something के जो full time कर रहे हैं उनको कैसे पढ़ना चाहिए. And I've also mentioned कि if you're studying, you know, just career advancement track. In a given week day, how much time do you should take out, and on weekends how much time you should invest. ठीक है ना, मैंने सब लिखा है इसमें. I have mentioned everything. Okay. So मैं उसमें देख के तुम लोग को सब कुछ बना के दे रहा हूँ उसमें कि weekdays में क्या करना है, weekends में क्या करना है. Weekends में तुम ऑफिस तो नहीं जाते ना, फजर के बाद तुम लंबा बैठो, सब घर वाले सो रहे हैं, नमाज पढ़ के सो गए, सोने दो, तुम 9 बजे तक बैठ के पढ़ो. So 5:30, 5 o'clock से लेकर 9 बजे तक 4 घंटे बैठ के पढ़ो. That's your 4 good hours. और शाम को फिर अलग से पढ़ो 1 or 2 hours. बाकी टाइम तुम फैमिली के साथ लगाओ. ठीक. This is what you have to do. If you start following, देखो Rasulullah sallallahu alaihi wasallam did everything through planning. ठीक है ना, everything through planning. I can only give you the examples of basically from the Quran and Sunnah, because Allah says in the Quran, whatever you do,
You have to do it as per the accordance of the Quran and Sunnah. There's nothing else. I mean, if I'm going, मैं washroom जा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, दूध पी रहा हूँ, ठीक है ना? I like, मुझे बकरी का दूध पसंद है, मैं लेकर आता हूँ, ठीक है ना? Goat's milk मुझे बहुत पसंद है, ठीक है? कफीर मैं पीता हूँ, कफीर, it's you can go to Costco, you can find kefir. It's a Russian, it's a Scandinavian something yogurt drink, right? Yogurt, लस्सी नहीं होती, ठीक है ना? तो वो लस्सी से थोड़ा ज्यादा थिक होता है और ज्यादा उसका कल्चर अच्छा है. It's good for your gut, right? So वो सब चीजें मैं I can give you all of those things, but what I'm saying is you have to follow those things properly. ठीक है ना? You will have the time and you will be able to retain information. Okay? Now going back to जो तुम्हारा उन्होंने भेजा है, let me open this thing. ठीक है ना? बूज एलन हैमिल्टन की जो इंटरव्यू प्रेप का उन्होंने तुम्हें कुछ भेजा है ना, right? Yes. Share it with They me. sent me a couple of stuff, their benefit stuff, and they sent me the interview things and whatnot. So, what are the benefits? Benefits क्या हैं? There, let me look it up again. क्या आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं. You can even apply for DevOps advancement track and say and ask them to reimburse your fee. They will do that. ठीक है? Yes. You can say, I want to get this training package because it covers DevOps and AI and big data, and I want to cover these things because it's going to facilitate me. There are all hands-on labs in here, so they will pay it for you. वो तुम्हारे पैसे दे देंगे. You don't have to pay anything. ठीक है? So that's another good thing that you can get from them, right? ठीक है? So कहने का मकसद ये है कि मैं तुम्हें वो I'm going to release the video possibly today because I made so many changes. I will let you know, inshallah. Okay. Let me see that. That Booz Allen Hamilton, because they ask some key questions, right? And those questions are really, really good. Okay. Right. So what I have done is कि हमारे कॉलेज के अंदर तो BSc और MSc स्टूडेंट्स के लिए उनको तो रोजाना तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना? So we will make sure कि उनको इस चीज के ऊपर पूरी तैयारी हम करवा रहे हैं. We are doing all of that. ठीक है? Okay. Hold on, just give me 1 minute. Also, employee benefits. Okay. So, I mean, benefits हम बाद में देखते हैं. Let's focus in getting in there first, right? Sure. Once we are in there, we can open the benefit section as well because there are certain things we can mention. And do exercise. Okay? You are a little bit unfit. Yeah. Okay? When was the last time तुमने अपना blood work करवाया था? कब था? I don't even remember, to be honest. I don't go to doctors. Get your blood work done. You'll be surprised कि ना diabetes, blood pressure ऐसी कोई चीज तो नहीं हो रही, ठीक है ना? Weight अपना control में करो, okay? Your waist is a good measurement. तुम्हारी जो waist है ना, that's the best measurement. A waist बढ़ रही है, that means something is wrong. Waist अंदर है और you're feeling fit and strong, ठीक है ना? And every person, जितने भी यहाँ मर्द हजरात हैं, they should be able to bench press a certain weight, ठीक है ना? As a barometer के भाई, they are strong enough, ठीक है ना? They should be able to lift a certain weight, right? So ये चीज उनके लिए जरूरी है. When I started doing exercises बहुत पहले, I used to bench press 200 pounds, 300 pounds. I went to 350 pounds, ठीक है ना? Used to bench press, right? तो इतने pounds, not kg, pounds, ठीक है? So pounds, not kg. So 300 pounds is like 150 kg something, right? So I used to do that. I don't do those kinds of crazy weights anymore, no, right? So what I do now is I will have अभी जो मेरे पास यहाँ पर जो सिर्फ rod है, that rod itself is 20 pounds because it's an Olympic class rod, right? So very thick, right? And then the weight जो लगे हुए इसके ऊपर, that's 25. So I will start with 25, 50 pounds, and then I will increase to 100 pounds and 150 pounds, and that's it. Okay? Yeah. So I can go further, but I don't want to because I will concentrate on reps, okay, rather than just lifting the weight, right? No. Yeah. Okay. So अपनी exercise करो, and you will see the difference in you. Yeah, this is the Sunnah method. Okay. Okay. So अब interview की preparation शुरू करते हैं तुम्हारी जो है इसमें. This is very important because this company is a big company. So यहाँ इन्होंने पूछा है कि preparing for your interview, ठीक है ना? और ये सवाल जो है उसके मैं तुम्हें उसी के हिसाब से बताऊंगा कि जो तुम्हारा काम है सब कुछ है.
our people are our greatest assets, ठीक है ना? So उससे बोलना कि अगर तुमसे पूछे ना, ये सवाल है ना, what sort of question should I expect to answer? Describe the greatest challenge in your last job and how you addressed it. So this is something related to गनीमा, ठीक है ना? The greatest challenge, अगर पूछें कि भाई what was the most difficult task you did, or what was the greatest challenge you handled, right? तो तुम उसमें बोलोगे कि भाई in my last job I was given a task of managing a SCADA network where I had to assess the whole network of IC 62443, and I also had to create controls. Now, the greatest challenge I had was the team was dispersed, right? And when you're working virtually, there are pros and cons of it. So the pros are like, yes, you have certain freedom, you can work, wherever you are, but the access to the people is sometimes cut off, the direct interaction, right? Because in an organization, it all comes down to people, processes, and technology, right? Technology cannot resolve anything for us, for any organization. It's the people and the processes. And the greatest challenge I had was I had to interact with these people instead of face-to-face. I had to interact them because of the COVID-19 and the pandemic. I had to interact them remotely. That was a challenge, because when you're working with someone face-to-face, you can study their, you can look at their face, you can study their body language, where they're coming, where they're going, are they nervous, are they feel relaxed? These pointers, they help you so that you can position your questions carefully, right? When you are working remotely, it becomes a challenge. I mean, don't get me wrong, IC 62443 is nothing. Here, this is being recorded, so likh lena chasko. Don't get me wrong, IC 624 is nothing. I mean, it's a control framework, yes. Just like any other framework, it's driven by, it's a combination of CIS, top 20 controls, ISO 27001, ISO 27019, because it also covers electrical grids, and 27017 and 18 for cloud security and cloud privacy and all these kind of things. But then it also has certain other flavors as well. So it's a combination of different frameworks, some NIST frameworks, some NIST publications, so on and so forth. But the greatest problem I had, the greatest challenge I had, I would say, was, I had to come up with unique methods of asking the right question from people. Because like when you are talking to someone, sometimes the cameras are working, sometimes the cameras are not working. And to interpret, their audio and understand where they're coming from, what they're doing, it's like you're fighting, blindfolded, right? So sometimes you have to be like Jackie Chan, right? You've seen those videos like where, the Karate Kid, right? Where he will train you by putting like a blindfold you, right? And then he will test you. So doing meetings on virtually is like blindfolded meetings. You really need to be, you really need to have those skills, which are very important for you to understand the tone of that person, so that you can position the question carefully, methodically, and be able to get that answer from them. This is very important, Shoaib. Abu Bakr, okay? So position yourself. And that was a challenge, but because of the COVID-19, just like, now we're in the post-pandemic, this was in the pre-pandemic, right? I have mastered that capability. And now I'm able to understand, even if the camera is not working or they're using a tape or something like that, right? I can understand where the customers are coming from. And this is my experience, right? If someone asks me to document this experience for you, I may be able to document something, but this all comes down to my unique skill set. So that was the greatest challenge. And I came up with my own, and so I started preparing my own questionnaires, because every client is unique. Some clients, they have legacy networks. Some clients, they are in the migrating their legacy networks into the cloud. Some clients, they have new networks into the cloud.
Some are using private cloud, some are using public cloud, some are using community cloud, some are using hybrid cloud, some are using the clouds, like infrastructure as a service or platform as a service or application as a service, database as a service, anything as a service. It becomes difficult, right? But over the time, because these things, you go and you see and you talk to people, you ask them, can you please show that to me, or this and that, give me that documentation, please, this, and let's meet on a coffee. You build up these relationships. Now, these relationship needs to be built virtually, right? And I'm enhancing myself to build up, to be a person so that I can build up these relationships. Because until the meta comes in, or the augmented reality or virtual reality kicks in and takes and enhances our work experience, we have to rely with Zoom and WebEx and all these, and Blue Jeans. Blue Jeans is another company. Again, Blue Jeans एक और company जो Facebook इस्तेमाल करती है, or Amazon Chime, or any of these companies for their remote productivity tools, remote working tools, right? And how I'm seeing it is that the industry will enhance in the next 15, 20 years at a level where we will start seeing in the next 5 years virtual reality kicking into the workforce. That's going to be very exciting, right? Because then you can see people, virtually meet them, discuss with them, work with them. And that is going to be exciting, and at the same time going to be challenging as well. It has its own challenges. So that's the greatest challenge I have experienced. Now, जो तुम्हारा आंसर है, इसको लिखना, ठीक है ना? Write it down. ये आंसर बहुत अच्छा आंसर है. किसी ने आंसर ऐसे नहीं दिया होगा इंटरनेट पे. ठीक है? This is unique. Alhamdulillah, right? So that's what you have to tell them. Okay, ये तुम्हारा हो गया पहला. और तुम्हारे CV के अंदर से related है ये सारी चीजें. Okay. So tell me about a time that you exhibited leadership qualities, right? So ये जो तुम्हारा दूसरा सवाल है, tell me about a time where you exhibited leadership qualities, right? So this is the second question they have. You can explain to them, working within the cloud, there is a certain expectation from you where you have to be on your toes. Cloud is very dynamic. The working environment is very agile. Every single person needs to have those key skill sets to be able to take decisions there and then. If I'm working in a cloud, as this company, this position at Booz Allen Hamilton is all about cloud engineer, right? So if I'm working over there, I don't have the time to go back and ask my, my manager or my supervisor, if I see something that something needs to be taken care of, and I can assess and I can perform a quick risk assessment, what will my change impact will do? Like, if it's like an infrastructure as a code environment, right? And these are the templates. If I see that the template requires me to enable or disable a certain machine as per the business requirements, I will go in and I will do it myself immediately, obviously, following the protocol of the change management and all those things. But for that leadership decision, for me to take that, leap of faith to go there and perform this thing, I need to have those key skills, like need to know Terraform, Dockers, Ansible, Bash, Python, Selenium, all these key things. So, and should have that experience to take that leap of faith and make that decision. So when you're working as a cloud engineer, it's a daily job. You have to go in and make decisions. And that is, I would say, a very important leadership decision in my view to make, right? That is related to my work, right? And if I see that someone needs some training, someone needs, and that was the reason that I was, I started climbing up the ladder very, very fast, within Ghanima, right? And where we have mentioned you, right? So that was one of the key reasons that I started going up very, very fast, right? So I would say that being a leader, you need to have some qualities, and I consistently and constantly keep on working in terms of building up and infusing those qualities, those key qualities
by enhancing my skills, because my job is where I have to take and make decisions, take tough decisions, make tough decisions, provide my consulting on a daily basis. And it's not easy, right? Being a cloud engineer is not easy. If you make one mistake, the cloud, basically infrastructure can be gone, because everything is now infrastructure as a code, security as a code. We're going through all of these different tools. We are embedding the security within that thing. GRC is also coming up as a code. So things are changing, right? Everything will be as a code, right? So as a code, AAC, ACK, right? You can say that. So you can say that's a new phenomenon which is going to come into the industry. Everything as a code, because everything will be, at the end of the day, whatever is residing in the cloud resides as a code somewhere, either on our side or on the customer side, right? So for me, exhibiting these leadership qualities by enhancing my skills and relying on my skills is very important, and my experience. And if I see something that I'm doubtful and I should not make this decision or take this decision, then what I do is that I always consult my superiors immediately and engage with them and say, like, we have a bigger problem. This template can mess up the whole system, or this is opening, or the last change is going to open all these different kinds of protocols. Right. And provide them explanation and go in and fix it, right? So you have to be proactive, and all of these sales skills are important before you are at that position to become like a leader in your domain, right? So that's another question. इसका मैंने answer दे दिया. Write it down, ठीक है ना? मैं तुमसे पूछूंगा. Do you want me to mock interview you again tomorrow? Yeah, I'm gonna re-listen to this and write everything. Write everything down, ठीक है ना? As if there is no tomorrow. ठीक है? ठीक है ना? So remember this. What is a project that you are most proud of, and what was your role in it, right? So the most important project I did last time, Bolo bhai, at this position where I'm working right now, it's okay, but that's not my position. I kept it over there. But the next position I'm looking for is something that I can transition, right? And go full time, because you have to put the bread on the table, right? So that needs to be there. So that's why I kept it over there. In the last position at Ghanima, when I was working, the most important thing I was proud of was basically migrating a client network from their traditional data center over to the AWS cloud, right? And this was in line with IEC 62443. I lost you. Has led me. Can you repeat that again, because I lost your connection. It is being recorded, so don't worry. It is being recorded. You can go there, right? And you can listen to it again. So my constant struggle for enhancing my skills and learning and infusing, all the key skills like DevOps and DevSecOps and SysOps and big data and AI and blockchain, right? Okay. These are the key technologies which are defining and reshaping the global industry as we speak. Yes, there is AR, VR, augmented reality, virtual reality, haptics, and these are the things as well. But for them to penetrate into the workforce, it's going to take another 5-10 years. But for now, these are the key technologies. And what I myself pride upon is that because of my constant struggle to learn these things, I was able to participate and execute that project, and even the CIO himself, appraised me that you did a very good job in terms of filling in the shoes
And these were pretty big shoes to fill in to begin with, right? Right. And I did that. And this was all because of my, hunger to learn new things and enhance myself. Now, Talha, Abu Bakr, listen, Yes. this is very important. There's a Talha sitting here as well. The Abu Bakr, this is very important for you. You have to learn these answers as I'm saying, with the same calm and composure, right? And you will be sitting like this and not like this or not like this, okay? So sit in a relaxed manner. Explain to them everything. Make sure that the room is quiet, right? बच्चा बच्चा शोर नहीं कर रहा है इधर उधर बीवी को बोलो भाई थोड़ी देर बच्चे को बाहर लेके बैठो ठीक है ना ठीक है और घुमा फिरा के ले आओ ठीक है इधर उधर आगे पीछे ठीक है but it needs to be quiet because this is your one shot. This is Booz Allen Hamilton we're talking about. Okay? So you have to be fully prepared because these answers are related to your your own experience that you have showed in your resume and that you have worked and learned within your DevOps advancement track and career advancement track, right? So make sure that you exhibit this in the same way. Okay? Tell me about a difficult technical challenge, right? You have encountered. And this is the last question, and how you encountered and how you resolved it. So, Bolo bhai, if I start showing my scars of difficult challenges, there are too many. Like we have these virtual scars in the IT world, right? Because technical challenges, they always leave a scar on you. But you learn something because if you see, if you're a kid and you get some kind of, injury, it leaves and if it leaves a scar, it reminds you not to do that thing again, right? Like if you're riding a bike or something like that, everyone has a bruised knee, right? Or has a bruised elbow, or, when we were skiing for the first time or rollerblading for the first time, we broke our ankles and stuff like that. That's childhood, right? But what we learned is what helped us in our careers, right? So similarly, in IT, you will always get these scars. You can call them technical challenges, but once you address them, it makes you a better man. It makes you a better, expert. It makes you, and this is what makes you a subject matter expert. So over the years, I've gathered all these virtual scars, right? And I would say in this world, nothing surprises me, anymore. You can find technical challenges. If it's a cloud challenge, there is nothing in the cloud that cannot be addressed. And one of the things that I, had was a Terraform template, which was too big. And this was a PCI DSS network, right? This is the lab that we have. जो मैं तुम्हें कराई है, मैं तुम्हें इसका access दे दूंगा पहले से, ठीक है ना? 40 minutes की lab है, तो you can do it. तुमने DevOps के अंदर. This is for ये हमने container वहाँ पर container मिलेगी, लेकिन तुम्हें मैं पहले access दे देता हूँ, ठीक है ना? So immediately remind me ताकि मैं तुम्हें साथ share कर दूँ, ठीक है? So बोलना कि भाई there was a complex three-tier architecture of a PCI DSS network. So there was a web server layer, there was a data app server layer, and there was a data server layer, database layer. And then there was also a fourth layer related to all the security monitoring solutions and whatnot, like the web application firewall, the file integrity monitoring, and all those kind of things. And the biggest technical challenge we had was, I had to face was that within the template, something was wrong. And, the template was too big. There were so many servers. Like, when you're managing infrastructure as a code, you can see a template with hundreds and thousands of lines. I mean, it's a template. This is how they're running and managing the infrastructure. Each server can have more than 600 lines. So you can imagine if they have 100 servers, multiply by 600, that's 600,000 lines, right? So you can imagine that it can blow up very fast, right? So you have to condense those templates because there are good ways of writing the templates and there are copy pasting ways of creating the templates. And then there are
developer ways of reducing the code and making it beautiful, as I call it, way of templates. And I, see these challenges every day, because you will find something, someone created this, looks like a good cup, but then someone else created this, it's like a big steel cup, right? So give them some examples. So this is this glass looks very beautiful. The other one, this is a box, as you can see, but it's a box, right? So anything that is within the box can become difficult. So you will find templates. As a cloud engineer, I will find templates, and within those templates, I have to make sure that I perform the risk assessments. I perform, check all the ports and services running in there, and what kind of compliance regime do I have to follow, the policies and procedures, to review them and make sure like the template is following all those policies and procedures. These are the challenges, and I see like this is a great, difficult technical challenge. But as I said, once you see them, you get a scar, a virtual scar, and that scar helps you. Whenever you go in and you try to resolve these issues, that scar helps you be a better man, right? And it takes over time. So, as the infrastructure is getting complicated, there's Dockers, there's Kubernetes, there are containers in there, everything is coming from left and right in the cloud. You will, I've seen customers using AWS, Azure, GCP, and IBM, all the 4 major providers. I've seen customers going from AWS to Azure. I've seen customers globally load balancing their servers from between AWS and Azure. So it's every day is a challenge. Every day is a technical challenge. Every day is difficult. What matters is that, what skills do you have, or what skills you have to keep on investing in to build up those things. So one of the things that attracts me, and this is where you can bring back the benefits, the employee benefits, right? So, is that what, build up your skills, as you mentioned, right? And I am looking into building up my skills within, cyber defense, offensive security, digital forensics, threat hunting, SCADA, ICS, SysOps within all the major cloud providers, AWS and Azure, that I'm targeting. GCP is still, very green in the area. It is still known as the startup in the cloud business. IBM has a small percentage of customers, but still good, because they have some excellent, solutions to provide. So I'm looking into expanding my skill set, and the DevOps and the DevSecOps. They all are the fabric of the cloud of a given customer. So if I'm working on customer, or or within Booz Allen Hamilton, like internal network, you guys are still using the cloud. I mean, there's no way you can't run away from the cloud, right? So that's what I'm looking for, and investing in myself, and that's one of the areas that I'm looking into, and basically also the flexibility I need. What is the flexibility I need that you offer, that that involves me, that I should be coming to the office, because it helps a lot to meet people, right? And then certain days I can work from home, right? So I'm looking for something like that as well, a hybrid approach, right? If it's all work from home, it's fine, but I still would like to come to the office, meet the people, have some coffee with these guys, build up relationships, because it is all about people and processes. The technology part comes at the very end. So on all of these, if you ask me, what is the most important thing you have learned over the years while working within the sector, all these different organizations, I would tell you, it all comes down to people, process. Then people are the ones who develop the processes, and the processes are the one through which you acquire what I'm looking into. ठीक है? So ये तुम्हारी बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है इसकी. अब तुम जाओ, इसको एक एक चीज को लिखो.
Write down each and everything. Okay. तीस मिनट का इंटरव्यू है, तुमसे यही 4-5 सवाल करेंगे, उन्होंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है? सो जैसे कब्र में अल्लाह ताला जब जाएंगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हमें पर्चा पकड़ा दिया, माल कैसे कमाया, कहाँ खर्च किया, ठीक है ना, वक्त के साथ क्या किया, और जो है ना इल्म के साथ क्या किया, जो सीखा क्या किया, मीन व्हाट हैव यू डन। उसके बाद फिर जिसने कब्र का पास कर ली तो वो 4 सवाल पास कर लिए, 4 सवाल पास कर लिए, वो आगे इसके सारे काम। I'm sorry, I don't know कि क्या हुआ इंटर यूसुफ, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर, जी आ रही है आपकी आवाज़। I'm sorry, ये मेरे ख्याल से इंटरनेट का मेरा मसला हो रहा था। मेरे पास दो इंटरनेट कनेक्शंस हैं, दो फाइबर के कनेक्शन लगे, मैंने ट्रांसफर कर लिया है, होपफुली इसमें नहीं होगा। जी बताइए अबू बकर। Hello? Yes, go ahead. Sorry, can you repeat the question again? Do you have any questions? No, I do not have any question. I'm just gonna review the video again once it's up, and gonna write everything down, inshallah. And yeah. यूसुफ, आप सवालात लो, जब तक सबके सवालात लो, मैं आ रहा हूँ। जी फैसल भाई, पहले जी जी मुनीब, आप बात करिए। जी मुनीब। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? हेलो, जी जी मुनीब, बोलिएगा। आवाज़ आ रही है आपको?
हाँ जी, मैं सुन सकता हूँ। ये था मेरा कि मैं अपना इशू इन लाइव सेशन में शेयर नहीं कर सकूंगा, बट मैंने सर फैसल को व्हाट्सएप पे एक टेक्स्ट किया था और मैं चाह रहा था कि, और ईमेल पे भी किया था कि मैं चाह रहा था कि वो जस्ट एक दफ़ा उसको रीड कर लें एंड देन रिप्लाई कर दें जस्ट। क्या इशू है आपका, बताओ मुझे। मैंने अभी आपको बताया कि मैं सबके सामने शेयर तो नहीं कर सकूंगा, बट अगर आप पर्सनल रहते तो मैं आपको टेक्स्ट कर देता हूँ। आप मुझे ये मैं चैट इनेबल करता हूँ, मुझे चैट में से जी चलिए ठीक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी। शुएब भाई बोलिए। क्या हाल है सर? वो बस सर फैसल से ही बात करनी थी कि भाई ना वो जो वीडियो थी ना जिसमें सर ने बताना था कि भाई हाउ टू स्टडी एंड व्हाट टू स्टडी इन कैट एंड डेवऑप्स, तो उस बारे में बात करनी थी। वो वीडियो प्लीज जल्दी रिलीज कर दें। काफी लोग ना जैसे बड़ा यानी कि वो हो रहे थे, बेचारे परेशान थे, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, और तो बस उसी के बारे में बात करनी थी। बाकी सर फैसल को मैंने ना व्हाट्सएप की थी कुछ चीजें, तो सर फैसल से बस कहना था कि बस उसे देख लें बस। आपको क्या मतलब उसमें मुझे बता सकते हैं क्या आप कहना चाह रहे हैं? मतलब डायरेक्ट आपने डेवऑप्स मंथली पे हो, किस पे हो? जी फैसल भाई आता जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बोलिए। सर शुएब अख्तर बोल रहा हूँ। तो सर वो बस आपसे वो वीडियो के बारे में बात करनी थी जो आप कह रहे थे ना कि कैट के लिए, जो अभी यानी कि कुछ देर पहले जिस वीडियो की जिक्र हो रहा था, तो उसी के बारे में कहना था। वो बात ना जल्दी थोड़ा सा रिलीज कर दें। काफी लोग ना जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप है ना, तो उसमें बहुत बेचारे परेशान है बस। और बाकी मैंने कुछ चीजें आपको व्हाट्सएप की हैं मैसेज ना, प्लीज वो देख लेना। आप कौन से वाले? वही शोएब अख्तर जो आइसक्रीम बनाता था? जी जी सर जी। क्या हो गया? तुम तो काम कर रहे हो ना अब तो तुम जी इसी जी कंपनी कर में आके काम कर रहे हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर। पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? सर ठीक माशाल्लाह चल रही है। बस वो AWS का अकाउंट बनाने के पीछे पड़ा था, तो वो MCB में जैसे बनाया ना, तो उसके जरिए वो AWS का अकाउंट बना नहीं, उसके ATM कार्ड के जरिए। तो अब दोबारा देख रहा हूँ कुछ और, किसी और अकाउंट। एटीएम कार्ड से नहीं बनेगा। मैं अमेजोन से बात कर रहा हूँ। जी होपफुली एक महीने के अंदर अंदर हमें कुछ सोल्यूशन बताएंगे वो, जिसमें हमारे जो डेवऑप्स के स्टूडेंट्स हैं जी। वो अपना फ्री अकाउंट में बना के सर्विसेज को टेस्ट कर सकेंगे। अभी तो सर वो डेवॉप्स का यानी कि जो है था ना, वो तो कोर्स यानी कि रिवोक हो गया ना, तो अभी फिर वो सिसऑप्स बचा है। फिर उसकी तो जो वीडियोस हैं वो तो फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है ना, तो इंशाल्लाह उसके लिए फिर जब तुम अच्छी तरह कमा लो, मेहनत कर लो, फिर जाके ले लेना। ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है जज़ाक। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट किसका सवाल है? जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, महरोज बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। फैसल भाई एक थोड़ा सा इशू शेयर करना था अपना। मेरा कैट का ना 5 मंथ्स कंप्लीट हो गए, तो अब मैंने डेवऑप्स पे वो ऐड ऑन करना था। तो वो थोड़ा सा मैंने हमजा भाई से बात की थी फीस की, आपसे की थी। आपने कहा था हमजा से कर लो बात, वो कर देगा ना, उससे कर लो, बिकॉज ही इज द मेन पर्सन, वो ही ये सब चीजें देखते हैं। तो अब वो 1.5-2 हफ्ते हो गए, मैं उनसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, वो नहीं आंसर कर पा रहे। तो मैं हमजा से बहुत हमजा एक बहुत बड़ी टीम मैनेज कर रहा है, उसके जी साथ जी मैं बहुत। जी। और दूसरा ये कि जब तक हम वेबसाइट की माइग्रेशन कर रहे थे ना, जो कि अभी हमने जी कंप्लीट कर लिया, लेकिन उसमें छोटे छोटे जो चीजें हैं उसको हम एड्रेस कर रहे हैं अभी। तो जी उसके बाद फिर पोर्टल पोर्टल की माइग्रेशन शुरू होगी, तो उसमें बहुत पोर्टल बिजी है। तो अगर वो जवाब पोर्टल नहीं दे रहा तो डोंट बी सरप्राइज कि यार जवाब क्यों नहीं दे रहा। नहीं, उससे एक्चुअली बात। मेरा क्या है, जी सॉरी टू इंटरप्ट, वो मेरा ये है कि मेरी जो मंथली सब्सक्रिप्शन है ना, वो 12 अगस्त अभी 4 डेज बैक खत्म हो गई। अब वो मैं रुक गया हूँ ना, अब मुझे एड ऑन भी लेना था, तो वो थोड़ा सा उनसे फीस के ऊपर मेरी बात हो चुकी थी ऑलरेडी लास्ट मंथ। तो वो अब मैं उनसे बात करना चाह रहा हूँ कि ताकि मैं उनसे कर सकूँ। अब वो 1.5-2 हफ्ते होने को हैं, आई एम नॉट गेटिंग आंसर फ्रॉम देम। नहीं, हमजा हमजा से तुमसे बात नहीं हो पा रही, क्या मसला है? मैंने उनको वेट व्हाट्सएप भी किया, मैंने कॉल भी वेट की करो, मैंने। वेट करो। मैं ये कह सकता हूँ, वेट करो। मैं अभी उसको उठा के पकड़ के यहाँ पे ले आऊँ तो बुरी बात नहीं नहीं होगी। नहीं 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 नहीं, आई डोंट वांट दैट, आई डोंट वांट दैट। मेरा ये था कि अब 7 डेज के अंदर
वो फीस का होता है ना कि आप फीस पे कर दें तो आपको वही पैकेज मिल जाता है, तो वो मैं उस चीज से ना पीछे हट जाऊं, मतलब मैं वो ना चला जाए हाथ से, बस इसलिए इन्फॉर्म करना था आपको कि ऐसा ऐसा सिनेरियो है। तो अगर मैं, ठीक है हमजा भाई बिजी हैं, 2 4 5 दिन अगर और ऊपर भी लग जाए तो मेरा केस फिर ये ना हो कि भाई नहीं अब आपने फीस करनी, वो तो नहीं होना ऐसा ना। चाहिए, जी असूलन वो नहीं होना चाहिए। अगर हमजा से बात नहीं हो रही तो तुम दूसरे तो लोग हैं, उनसे बात कर लो। एक्चुअली वही सारी चीजें मैंने हमजा भाई से की थी ना, केस डिस्कस अपना, अब फिर वो उनसे करूंगा, फिर वो हमजा भाई अवेलेबल, मैंने कहा चलो बात हो जाए, वो ऑफिस में वहाँ बहुत कहीं सारे बाहर। लोग हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, मुझे समझ नहीं आया तुम सिर्फ हमजा का क्यों वेट कर रहे हो। ठीक है, मैं हमजा को बोल देता हूँ, इनका नाम अब्दुल बासित, इनका नाम लिख दो, और प्लीज हमजा को बोलो कि हम्म, जी मतलब कि जी ना। आपके पास होगा मेरी सेव भी की थी लास्ट टाइम, महरोज फारूक, मैं आपके फोन में हूँ, चेक कर लीजिए। क्या लिखूं मैं, महरोज लिखूं? महरोज फारूक सर, टैक्सेस आ रहा था ना मैं, लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम है। टेक्सास तुम आ रहे थे? अच्छा 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 अच्छा। आपको याद आ क्या, या महरोज मैं फिर से 751 तुम्हारे नंबर के आखिर में आता है? 71939997। नहीं, मुझे मैसेज पिंग करो, मैं यहाँ बहुत सारे मैसेजेस हैं, हजारों की तादाद में मैसेजेस हैं। अब मुझे कोई मैसेज, अच्छा महरोज फारूक, जी जी आपने हाँ बोला तो ठीक मैं है। सेव करता हूँ, लेकिन वो आई थिंक आप शायद भूल गए होंगे। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। नहीं, मैंने सेव किया हुआ है, महरोज फारूक डेवऑप्स लिखा हुआ है, टेक्सास। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली यही है, बस वो अ, अब ठीक है, आई कैन वेट, मैं हमजा भाई से बात करता हूँ या किसी और से बोल देता हूँ कि बात कर लें एटलीस्ट। मैं अभी बोल देता तो हूँ हमजा को कि भाई आपसे बात कर लें। ठीक है, चले, बस ये बात करनी थी। जजाक ठीक है जी, नेक्स्ट लेकर आइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। फैसल भाई साथ बात कर रहा हूँ स्टोनी क्रीक ओंटारियो से, और आपसे बात करना चाह रहा था मैं रिगार्डिंग माय करियर। मैं जो हूँ वो डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक लेना चाह रहा हूँ, बट मुझे तकरीबन 1 मंथ से 1.5 मंथ लगेगा ड्यू टू सम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। सो हम्म। मुझे सजेशन लेनी थी सर कि मैं इन 1.5 महीने में क्या ऐसी चीज़ पढूं जो कि will be helpful for me in order to start my CAT and DevOps advancement track. जो चीज पढ़नी है सारी, वो सब तो वहां बता दी है। क्या पढ़ना चाहिए तुमको पहले से, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। हमने जो पोर्टल डिजाइन किया है ना, वैसा डिजाइन किया है कि उसमें सब चीजें हमने बता दी हैं, किसको क्या पढ़ना है, किधर पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पोर्टल से बाहर अगर मेरे पास कोई आके बोलेगा मुझे पढ़ना है, मैं क्या करूं, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई क्या करना है तुमको, सबसे पहले तुम अपने लैपटॉप का बंदोबस्त कर लो। तुम्हारे पास कोई लैपटॉप हो जिसमें 4 से 6 GB रैम हो, क्योंकि इससे आगे तुम्हें नहीं चाहिए, ठीक है ना। तुम्हारे पास एक अ, कुरान हो, मुसलमान हो ना भाई, क्या नाम है तुम्हारा? जी जी, साथ फारूक नाम। साथ फारूकी ना। तो एक कुरान हो तुम्हारे पास पढ़ने के लिए, ठीक है ना। ये जो वीडियोस अभी आज रिलीज होगी, आज या कल में होगी, मैं आज कोशिश करता हूँ, वो तुम देख लो कि मुझे पढ़ना कैसे है। ओंटारियो में रहते हो, ठीक है। तो अपने आप को तुमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसको पहले से ही काम थोड़ा करना शुरू कर दो। कुछ वीडियोस वहाँ फेसबुक पे रखी हैं बहुत सारी, तुम देखना शुरू कर दो। बॉस कितने यहाँ के रेजिडेंट हो, क्या हो, अभी आए हो, क्या कर रहे नहीं नहीं, नेशनल हूँ सर मैं। हो? नेशनल हूँ, सिटीजन। अभी क्या करते हो? अभी मैं टेक्निकल सपोर्ट की जॉब करता हूँ शॉपिफाई में। शॉपिफाई में? हम्म। शॉपिफाई तो पूरी क्लाउड कंपनी है। अच्छा, हाँ, मुझे मेरा सेकंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, थोड़ी सी करियर गाइडेंस भी चाहिए थी आपसे मुझे। तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ वो पढ़ना है। और यहाँ जो लड़के नेशनल हो के तुम यहाँ शॉपिफाई में वो कर रहे हो, वो बच्चा PR पे आता है और वो PwC में काम कर रहे हैं। कोई डेक्सा टेक्नोलॉजी कंपनी स्काडा में, कामरान लतीफ वहां पर काम कर रहा है। $85,000-90,000 उनकी सैलरी। तुम्हारी क्या सैलरी है? इतनी तो नहीं होगी सब नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है, इसकी तकरीबन कोई समझे 70% भी नहीं है। और नहीं यार, मैं
हाँ सीरियसली, क्योंकि मेरा असल में बैकग्राउंड ये था, मैं लीडरशिप पोजीशन से आया हूँ एप्पल केयर की ना। तो मैं टीम लीड का मेरे पास एक्सपीरियंस है तकरीबन 4-5 साल का। उससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। तो मैं टेक्निकल सपोर्ट की जॉब में आया कि मैं यार हैंड्स ऑन कुछ टेक्निकल कुछ सीख लूँ। बट यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे तो ये ऑपरेशंस के अंदर डाल दिया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आपको कॉलें लेनी है, ईमेल पे रिप्लाई करना है, ये करना है। तो मुझे ये लग रहा है कि मेरी लर्निंग भी नहीं हो रही हैंड्स ऑन टेक्निकल के ऊपर, और मैं जो पिछला मेरा जो लीडरशिप का है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस था, वो भी सब नल एंड वाइड हो गया। तो मैं एक तरीके से स्टक हो गया हूँ, सैलरी भी कोई खास नहीं है। एप्पल में तुम काम करते थे? हाँ, एप्पल का एक कॉन्ट्रैक्टर था कंसेंट्रिक के नाम से, उसके अंदर था मैं टीम लीड। तकरीबन 17-18 टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट की टीम को मैनेज करता था मैं। और अब तुम खुद टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट बन गए यहाँ पर? हाँ, क्योंकि मुझे ये हुआ कि यार मैं कुछ हैंड्स ऑन टेक्निकल पढ़ लूंगा, कुछ सीख लूंगा, एक्सपोजर आ जाएगा तो मैं इस फील्ड में खुद ही आगे बढ़ जाऊंगा। बट लेकिन मैं स्टक हो गया हूँ यहाँ पे अभी आगे। तुम्हें पता है कि कुछ अर्से में जितना भी टेक्निकल सपोर्ट का काम है खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा का सारा काम जो है वो उसमें जा रहा है, क्लाउड की तरफ जा रहा है और में चला गया है जितना उसमें काम हो रहा है। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीवन कि इतने सारे सपोर्ट स्पेशलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एमएल एआई उस पर काम कर रहा है। ठीक है, एनीवे तुम्हें क्या करना चाहिए, अभी तो बैठ के तुम पढ़ाई करो अपनी। मतलब कि मैं तुम्हें ये कहूंगा, 1.5 महीना है तुम्हारे पास, 1.5 महीने में तुम क्या करोगे? टाइम जाया तो नहीं कर सकते, बैठ के पाइथन पढ़ो अगर कहीं से पढ़ सकते हो। ये यूट्यूब पे तुम्हें हमारे इसमें काफी थोड़ी बहुत मिल जाएगी। सीएसएस पे कुछ लेक्चर सुन लो, कुरान की कॉपी रखो अपने पास, एक वो रखना, अपना कंप्यूटर वगैरह तैयार कर लो, और क्या नाम है, मेहनत करो इसके ऊपर। बैश सीखो, बैश अगर तुम्हें कहीं से कोई सिखाता है। ठीक है, और बहुत सारी चीजें सीखने को है, लेकिन सारी हमने डाल दी हैं। मुझसे कोई आके बोले ना कि भाई मैं क्या करूँ, बोलता हूँ जाओ अंदर चले और सब कुछ है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि भाई नहीं मैं अंदर नहीं जाना चाहता, फिर मैं क्या से जाऊँ, तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ना, क्योंकि उससे चीजें मैंने बना के रख दी हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई शख्स आया, बोले मैं क्या करूँ, और भाई कलमा पढ़ो, जो इस्लाम के अंदर सारे जो अहकामात उस पर अमल करो। बोले नहीं मुझे ये नहीं करना, तो मैं क्या बोलूँ उसको फिर? ठीक है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट ना। ये अच्छा फैसल भाई, मुझे बताइएगा एक चीज़ और कि अभी मेरे पास जो जितना एक्सपीरियंस है उसकी बेसिस पे अगर मैं कहीं मैनेजमेंट पोजीशंस की, लीड पोजीशंस के लिए अप्लाई करता हूँ तो कोशिश करूंगा तो मुझे मिल जाएगी। तो क्या मैं डिफरेंट कंपनीज के लिए अप्लाई करूं? क्योंकि अगर मैं उस पोजीशंस पे जाता हूं तो उसमें मुझे ऑपरेशन में डे टू डे मतलब काम इस तरह नहीं करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो मैंने पहले भी की है। अभी तो ये है कि मेरा टाइम पंच इन पंच आउट, एक एक मिनट मेरा कैलकुलेट हो रहा है, राइट? तो मैं शॉपिफाई के अंदर ही रहता रहूं और पढ़ता रहूं, या फिर मैं मैनेजमेंट पोजीशंस के ऊपर पोजीशन पे किसी कंपनी में चला जाऊं जिसके बाद मेरे पास थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस हो और मैं अपना जो हूँ वो पढ़ाई साथ साथ करता हूँ। आपके क्या सजेशन है इस बारे में? भाई अपने हालात तब्दील करने हैं तो कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास सारा एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट के सब चीज़ों का, तो तुम जाओ उसको यूटिलाइज करो। अगर तुम्हें कहीं कोई काम मिलता है तो गो फॉर इट, उसको पकड़ लो और अपने आप को फाइनेंशियली इंप्रूव करके फिर उससे आगे बाहर निकल जाओ। तो ये तो नो ब्रेनर है ना, इट्स अ नो ब्रेनर, राइट? You don't even have to ask this question, you're smart enough। ठीक है, तुम इतने स्मार्ट हो गए, तुम्हें पता है कि क्या चीज है, सो जस्ट फॉलो इट। मैं तुम्हें इतना कहूंगा, जस्ट फॉलो इट, जस्ट फॉलो इट थ्रू। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिलती है गो फॉर इट, फॉलो इट, इंशाल्लाह मे अल्लाह गिव यू सक्सेस। मुझे तुम्हारे पास क्योंकि बेहतर हो जाए तो आगे चले आना। लास्ट टाइम जब तुम वहाँ काम करते थे एप्पल में, क्या सैलरी मिलती थी उस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू? तकरीबन कोई 55,000। वो भी कम थी, वो भी कम थी। ठीक है ना, तो यहाँ तो स्टार्टिंग सैलरी लड़कों की पीडब्ल्यूसी और डिलॉयट में इधर उधर 75-85 लगती है। ठीक है, एज एन एसोसिएट्स वो लग के काम कर रहे होते हैं। सो यू कैन सी के कितना डिफरेंस है। और यहाँ पाकिस्तान इंडियन कम्युनिटी जो यहीं के बॉन्ड है, वो अपने आप को थोड़ा सा वो ना मतलब कि ना अनवॉन्डेबल समझते हैं। बोले हम तो सुपरमैन हो गए, हम तो कुछ नहीं होगा, हमें यहीं के सिस्टम से पढ़कर आ रहे हैं। जब जॉब नहीं मिलती फिर कहते हैं ये क्या हो गया, तो समझ नहीं आई ये कहानी क्या हो गई। फिर उनको समझ आता है कि क्या हो रहा है।
सो इसलिए बहुत सारी जो यूथ है यहाँ पर वो फारिग बैठी हुई है, राइट, और वो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है। तो मैं यही कहूंगा कि फॉलो थ्रू, अगर अच्छी कोई और जॉब मिलती है उसको पकड़ो और इन्वेस्टमेंट करो अपनी पढ़ाई में, आगे निकलो। शॉपिफाई में जो काम कर रहे हो उसके साथ अगर तुम डेवऑप्स का काम करते हो और तुम ये दिखाते हो कि मैं शॉपिफाई में कर रहा था और मैं गनीमा के ऊपर भी डेवऑप्स का काम कर रहा था, तो डेवऑप्स में तुम्हारी पोजीशन बहुत अच्छी लग जाएगी, जल्दी मिल जाएगी और बहुत अच्छी मिल जाएगी। यहीं पर ही जल्दी निकल के घुस जाओगे तुम, यहीं पर ही जल्दी जल्दी। मैं तो कहूँगा कि मेहनत करो थोड़ा सा और जल्दी जल्दी निकालने की कोशिश करो अपने आप को, ठीक है। लेकिन डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक जरूर पढ़ो, दैट्स व्हाट आई वुड रेकमेंड। ठीक है जी, नेक्स्ट लेकर आइए। मुनीब परवेज कौन है, क्या सवाल है इनका? मुनीब परवेज आप कौन है? वालेकुम सलाम। जी जी आवाज। मेरी ना आपसे लास्ट टाइम दिसंबर में बात हुई थी अबाउट माय जॉब कि मैं जॉब से रिजाइन करना चाहता था, तो आपसे सजेशन वगैरह ली थी। बट अभी मुझे एक इशू है और मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, बट लाइव सेशन में नहीं कर सकूंगा मैं। तो मैंने आपको व्हाट्सएप एक मैसेज किया था और ईमेल भी किया था मैंने आपको, काइंडली बस एक दफ़ा रीड कर लें और उसका रिप्लाई दे दें। अच्छा, आप अपनी मैसेज सामने कर दें, व्हाट्सएप पे भी भेज दें मैं अगर अगेन आप। कर दूँ? जी, तो अगर मुझे नजर आ जाए मैं पढ़ के बता दूंगा आपको, ठीक है जी। सैयद आरिफ अली, मैं 2-3 सवाल लेके निकलूंगा क्योंकि मुझे काम करना है बहुत सारा। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, मैं इंडिया से बात कर रहा हूँ। जिया खान यूके वाले, उनके रेफरेंस से मैं आया हूँ। जिया खान अ, कौन सा वाला, क्या पूरा नाम क्या? ये जिया खान यूके वाले, ये इसी मीटिंग में है शायद वो। जिया यूके खान मेरा एक दोस्त भी है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वो पूरी फैमिली है, मुराद जिया खान, मंसूर जिया खान, मुख्तार जिया खान, कौन है? यूके से है, वो स्टूडेंट है सर न्यूयॉर्क यहाँ से। पे। अच्छा, ये न्यूयॉर्क वाले सॉरी, जिया खान। अच्छा जी जी, न्यूयॉर्क मैं न्यूयॉर्क, इनको, आई एम ये सॉरी अलग है, ठीक है, बोलिए बोलिए। सर। मैं ये चाहता हूँ कि साइबर सिक्योरिटी में मेरा इंटरेस्ट है और मुझे इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं इसमें ना एंटर होना चाहता हूँ। तो इसके लिए क्या चीज़ कर सकता हूँ मैं? ये जितने भी प्रोग्राम्स हैं ना, इसके ऊपर आप स्ट्रीम पे जाएंगे, आप यूट्यूब पे जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ के कहाँ जॉब मिल सकती है, क्या कर सकते हैं, वो सब हम बता चुके हैं। तो जी आप जी जी। अगर आप मेहरबानी करें, अगर आप वहाँ चले जाएं और आप वहाँ जाके सर वो देख लें मैं, तो आपको बहुत फायदा हो जी जाएगा। जी, मैं 15 दिन से देख रहा हूँ कैट और इसके बारे में बताया है, तो मैं क्या मुझे करना चाहिए, या आपसे सजेशन लेना है? अगर आप इंडिया में हैं और आपने जी, इंडिया इंडिया से बात में कर रहा रह हूँ। के काम करना है तो डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक है, उसमें कैट भी ओ, शामिल है। अगर आप ओके। उससे बाहर निकलना है तो डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक और कैट आपको बाहर लेके जा सकेगा। हमारा कल एक बड़ा इवेंट है, आप उसमें जाके रजिस्टर हो जाइए nafe.com/events के नाम से, ठीक है। ओके सर, आप ठीक है इसमें सर। जाके रजिस्टर हो जाइए, आप उसमें आ जाइए। हम वो इवेंट करते हैं, क्लोज डोर इवेंट होता है, उसमें आप रजिस्टर कर लें अपने आप को, आ जाइए अंदर और जी जी सर, इसमें ना सवाल अभी मैं, जो भी आपको पूछना है आप पूछ सकेंगे वहां पर। यूके में काम करना है, यूके से बाहर जाना है, क्या करना है, सब चीजों के ऊपर डिस्कशन है, ठीक ओके है सर। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल किसका है भाई? मोहम्मद सोहेब जी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। सर मैं आपका साइबर डिफेंस का स्टूडेंट हूँ, तो सर आप तो मुझे डेवऑप्स पे ना अपग्रेड करना था अपना। तो सर अभी रिसेंटली आपकी जो वेबसाइट अपडेट हुई है तो उसमें ईयरली प्लान है, पहले 2 लाख कुछ का था, अब 3.5 लाख का हो गया। तो सर पहले जो आपकी जो ईयरली फीस थी तो मैं उसके लिए ना पैसे जमा कर रहा था, लेकिन सर वो अल्टीमेटली अभी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं सर फीस अब वही थी, मेरी फीस 3.5 लाख थी। हमने उसका जो एक्सेस था, उसके एक्सेस को हमने जो है ना 12 महीने की जगह 18 महीने पे कर दिया था, ठीक है ना। फीस वही थी, वही 3.5 लाख रुपए फीस है, ठीक है ना। सर ये तो पहले 2 लाख कुछ आ रही थी ना, नहीं अब नहीं वो तो नहीं मंथली नहीं, पहले। हमने देखो, हमने वो ऑप्शन खत्म कर दिया कि 18 महीने पे कोई नहीं होगा, साल की फीस पे करेंगे आपको 18 महीने का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि भाई ये क्या है। हम लोग एक उसमें मंथली प्लान था, क्वार्टरली प्लान था, 6 मंथली प्लान था और एनुअल प्लान था। हमने उसका एनुअल की जगह जो ना 18 मंथ्स का प्लान भी डाल दिया था, तो वो 3.5 को हमने मल्टीपल प्लान पे डिवाइड कर दिया था, ठीक है। उसके सर बाद जब जो CFO है उसने कहा कि भाई जब ये कोर्स ही इतने का है तो हम इसके ऊपर क्यों कर रहे हैं ना, ठीक है। तो वो वापस उस पर आ गया, तो वो ऑप्शन हमने हटा दिया।
सर क्योंकि वो सर मैं पहले आपने आपको मुझे कहा था इसमें अपग्रेड करने के आपको बाद। इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने पैसे जमा कर लिए हैं, आप उसके जमा कराएं, आपको 3 4 6 महीने मिल जाएंगे, आप बाकी पैसे बाद में जमा करा दीजिए, एक्सेस सर आपको सब मिल जाएगा। सर 2 लाख से सर मैं ज्यादा नहीं कर सकता सर, बड़ी मुश्किल से ये किया मैंने, और आपने अब आपने बढ़ सिंपल गए तो काम अब बड़ा करना है। मुश्किल होगा। आपने सिंपल काम करना है कि आपने उससे बात करनी है, ठीक है ना। क्या नाम है इसका, हमजा से। आप हमजा से बात करें, बोले भाई मैं ये फीस जमा करा सकता हूँ, आप मुझे इसका एक्सेस दे दीजिए। वो आपको बता देगा कि आपको 3 महीने का एक्सेस मिलेगा, 6 महीने का एक्सेस मिलेगा, 9 महीने का एक्सेस मिलेगा, आपको बता देगा। दैट्स इट, ठीक है ना। जो जिस हिसाब से फीस जमा कराएगा उसके हिसाब से उसको एक्सेस दिया जाएगा। देखो मैं अगर जाके अमेजोन को बोलूं, जो मुझे हजारों डॉलर बिल बनाता है रोजाना का, मैं उसको बोलूं यार कि देखो मैं जो है ना ये नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ, वो मेरे सर्विसेज बंद कर देगा। मैं उसके सामने ये नहीं कर सकता, ठीक है ना। बल्कि अभी हमने उससे $1 लाख का क्रेडिट के लिए भी अप्लाई किया कि भाई आप हमें क्रेडिट दे दें 1 लाख, क्योंकि हम आपकी सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, सही है, हाँ इसके ऊपर हम लोग इस पे काम करते हैं, आप प्रपोजल जमा कराएं। तो अब मैं प्रपोजल भी लिख रहा हूँ, उस पर सब काम हो रहा है, अभी टीम पूरी काम कर रही है और वो जाएगा इनके पास। तो इसी तरह अजोर ने भी हमें कहा कि आप भी प्रपोजल जमा कराएं, क्योंकि हमारे बहुत सारे बच्चों को आप हमारी बहुत सारी सर्विसेज पढ़ा रहे हैं। गूगल वालों से मैंने कहा कि मुझे गूगल वालों की इतनी कोई सर्विसेज ही नहीं है, और तो मुझे मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। गूगल वालों ने कहा, मैंने कहा नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ठीक है ना। IBM वालों ने कहा, मैंने कहा IBM ने, मैं तुम्हारे साथ इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, क्योंकि उनकी सर्विसेज ज्यादा हैं, उनके कस्टमर्स ज्यादा हैं। सो कहने का मकसद ये है कि भाई मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, और वो सारी चीजें लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी से कोई पैसे नहीं लेता, जो तुम्हारी इस्तिताअत है तुम उसके हिसाब से पढ़ो। मैं तुम्हें कहूंगा तुम्हारे 2 लाख रुपए है ना, तुम बोले यार मैं सिर्फ कैट पढ़ूंगा, अभी मेरे पास पैसे ही नहीं है, और बस खत्म, तुम कैट पढ़ो खाली। तुम्हें क्यों, क्या जरूरत है अपने आप को फाइनेंशियली आगे ऊपर आगे एक्सटेंड करने की? क्यों, व्हाई आर यू डूइंग दैट? क्यों कर रहे हो? मना फरमाया अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने ही मना फरमाया, ठीक है। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि भाई वो अल्लाह ताला किसी पे इतना बर्डन डालते ही नहीं, तुम व्हाई आर यू डूइंग दैट? सो बोलो भाई ठीक है, मेरे पास इतने पैसे थे, आप मुझे इसके कितना एक्सेस दे सकते हैं ताकि मैं वो कर लूँ, खत्म। तो तुम जाओ उसकी मेहनत करके वो काम कर लो। ये मेरा तुम्हारे लिए मशवरा होगा मोहम्मद सोएब, दैट्स गोइंग टू बी इजियर फॉर यू, ठीक है ना। मोहम्मद अबरार खान, बोलिए क्या सवाल है आपका? बोलिए मोहम्मद अबरार। जी बोलिए। मोहम्मद अबरार, अच्छा बाबर जावेद साहब, आप बोलिए क्या सवाल है आपका? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह जी। हाँ जी सर, क्या हाल? अच्छा सर, मैंने रिसेंटली कैट ज्वाइन किया है जी और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे स्टार्ट करूं और कहाँ से करूं। पर मैंने ये कहना था कि मेरी पाइथन पे भी अच्छी कमांड है, वेब स्क्रैपिंग भी की है मैंने, और मैं ना उसमें देख रहा था, आप कह रहे थे कि वीडियो में कह रहे थे कि हमें अलनाफे का लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, अब तो हम कंटेनर्स लेकर आ गए, उसकी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। तो ओके देर ओके। इज नो नीड फॉर दैट। वो आज आज हम्म। तक खत्म हो जाएगी। अगर किसी को करनी है, इस्तेमाल करना चाहता है, वो कर सकता है, लेकिन नहीं, उसमें हम्म। जरूरत नहीं है, देर इज नो नीड। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ये बताइएगा कि मैंने लैब्स पे प्रैक्टिस करनी है, तो मैं क्या 6 मंथ वाला ले लूं? क्योंकि मैंने अभी मंथली लिया था, मुझे पता नहीं था। और मसला ये है कि मैं अभी काम भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ, और साथ में ये कैट का भी कर रहा हूँ। ये सारे सवाल के जवाब आपको सेल्स की टीम बड़े अच्छे तरीके से दे सकती है कि आपको किस एक्सेस में कौन सा एक्सेस, वो लैब्स का एक्सेस कब से मिलेगा अगर आप मंथली पे आएंगे। जो एनुअल पे आता है उसको सारा एक्सेस दे दिया जाता है, ठीक है ना। उसको ओके। उसको रेज्यूमे बनाने की भी फौरन से इजाजत होती है, ठीक है ना। इंटर्नशिप लेटर की, सब चीज़ों की वो उसको दे दिया जाता है। जो ओके। और जो 6 मंथली पर आता है तो उसको 6 महीने की लैब्स दी जाती हैं। लैब शुरू होती हैं तीसरे महीने से, ठीक है ना। तीसरे महीने आपको दी जाती है, तीसरे या चौथे महीने से लैब शुरू होती है, जिसमें आपको VA की लैब दी जाती हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद WAP की, वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग की दी जाती हैं। फिर WSTG, वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग गार्ड की दी जाती है। फिर नेटवर्क पेन टेस्टिंग की दी जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको डिवाइड किया जाता है। फिर उसके आगे जो लैब्स हैं IC 62443 की, PCI DSS की, उसी तरह खुलती चली जाएंगी, ठीक है।
तो अगर आप एनुअल लेंगे आपको फॉरेन एक्सेस मिल जाएगा, सारी सर्विसेज आपका एक्सेस आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको तोड़ के लेंगे फिर आपको उसके हिसाब से वही चीज मिलेगी। देखो जो जितनी हिसाब से जिस हिसाब से वो आएगा उसको उसी के हिसाब से एक्सेस दिया जाएगा। ये नहीं होता कि आपने मंथली लिया एनुअल लिया बोला मुझे सारा एक्सेस चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ नहीं ठीक है ना। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताइएगा सर कि मैं I am doing masters in IT, so I have to do my specialization rather in cybersecurity or in data science. डेटा साइंस कोई चीज नहीं है, डेटा साइंस एक टूल्स है, ठीक है ना। डेटा साइंस जो है ना, अगर कोई ये बोले कि भाई डेटा साइंस जो है ना एक पूरी फील्ड है, वो एक टूल्स हैं, उसके टूल्स हैं। डेटा साइंस कॉम्प्लीमेंट्री टेक्नोलॉजी है जो कि डेटा जहां पर भी है और डेटा हर जगह मिलेगा आपको, और वो सिस्टम्स निकाल रहे होते हैं और इन सिस्टम्स को कंप्लाइंट करना होता है तो उसको सपोर्ट करता है। तो अगर आपने करना है तो मेरा मशवरा है आप जाएं, आप स्पेशलाइजेशन जहां से भी कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं, किधर से कर रहे हैं आप? मैं ऑस्ट्रेलिया में मर्डॉक से कर रहा हूँ। तो आप जहाँ ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी में कर लें या डेटा साइंस में कर लें। स्पेशलाइजेशन करने से कुछ नहीं मिलेगा, एक थप्पा लग जाएगा बस, ठीक है ना। वही जिस तरह वही मेरे ऑफिस, इसीलिए जिस तरह मेरे जो दूसरे लड़के हैं जो वहां पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई PwC में, जैसे मैंने नाम लिया था, ऑस्ट्रेलिया के अंदर PwC में है, ENY में है, फुजित्सु सीमेंस के अंदर है, और मुख्तलिफ दूसरी कंपनी में है, ठीक है ना, डिलॉयट में है। तो वो सारे जो लड़के हैं वो डिग्रियां करके ऐसे बैठे हुए थे, कोई उबर चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यहाँ पढ़ने के बाद बिंगो इंडस्ट्री में एहतशाम है, बिंगो इंडस्ट्रीज के अंदर घुसा हुआ है, ठीक है। तो उन सबकी जॉब्स कैसे हुई? वो जॉब्स इस तरह से हुई भाई कि उन्होंने यहाँ हमारे पास बैठ के ये सारी चीजें पढ़ी और उसके बाद उन लग गए काम पर, ठीक है। तो अगर आपको काम पे लगना है तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि आप डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक बैठ के पढ़िए। अगर आपके पास बहुत टाइम है, सब कुछ है, तो फिर आप डेवऑप्स और ब्लॉकचेन दोनों पढ़ सकते हैं। ये सारी वीडियो जो है ना मैं जो भी रिलीज करने वाला हूँ, तो मुझे बस निकलना है, ये आपका आखिरी सवाल था जिया खान का, लेके फिर मैं जाऊंगा। तो वो उसमें मैंने सब चीजें बताई हैं कि आप कैसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कितना पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ऑल ऑफ दीस थिंग्स हैव बीन एक्सप्लेन। जी नेक्स्ट जिया खान बताइए क्या हुआ आपको? तुम्हारे पीछे पुलिस तो नहीं आई ना, FBI वाले तो नहीं आए तुम्हारे पीछे? जिया खान नहीं सर, अस्सलाम वालेकुम सर। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। अच्छा नहीं, सर मैंने कहा तुम्हारे पीछे कोई आ नहीं गया हो यार, तुमने कहा भाई। सर अच्छा वो सवाल ये पूछना, सर मेरी बेटी है 13-14 साल की है वो, तो सेकंड ईयर में सेकंड ईयर उसका हाई स्कूल का। तो सर मैं उसको सिखाना चाह रहा हूँ, तो सर इसका इंग्लिश में ट्रैक मिल जाएगा ना मुझे, कैट वगैरह का? आप क्या मशवरा देते हैं सर उसके लिए? वुमेन एडवांसमेंट ट्रैक इंग्लिश में अवेलेबल है, स्पेनिश में अवेलेबल है, फ्रेंच में अवेलेबल है, तमाम जबानों में अवेलेबल है। जो 13 जबानें जो दुनिया में 8 अरब में से 5 अरब लोग जो बातें करते हैं, उसमें इंग्लिश भी है, बिल्कुल जी अवेलेबल है, कर सकते जी हैं। और जी अगर वो सर। इतने साल की है और हाई स्कूल में है, अगर उसने कर लिया तो शी कैन ज्वाइन माइक्रोसॉफ्ट गूगल एट अ वेरी अर्ली एज, ठीक है। जी सर। जल्दी वो जाके काम कर सकेगी। उसको बोलो ठीक है भाई, बिल्कुल उसको बोलो कि फॉलो अप करे, और बच्ची की ना बेटी की बात भी करा दो मेरे से, ठीक है। आई जी विल सर हेल्प, आई विल एक्सप्लेन इट टू हर कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहाँ के बच्चों को थोड़ी देर से समझ आती है चीज़। जी सर। सर वो असल में 20 वाला ज्वाइन कर रहा हूँ ना मैं, तो उसमें शायद मैं उसको लेके आऊँ, तो फिर वो पूछ लूंगा सर क्वेश्चन। हाँ और उसको सर उर्दू मैंने समझ आज आती है कि नहीं? उर्दू समझ आती सर, है? जी सर थोड़ा थोड़ा आती है। मैंने उसको स्पारा वगैरह शुरू करवाया हुआ है, पाकिस्तान से एक एक मोहतरमा है वो पढ़ाती हैं उसको ना स्पारा वगैरह, तो आता है थोड़ा बहुत सर। इंग्लिश उर्दू भी आती है थोड़ी बहुत, अरबी भी बोल लेती है। यहाँ हमारे पास ना एक शेखुल हदीस शेखुल कुरान है, कुरान पढ़ाते हैं इस्लामिक एकेडमी के अंदर, शेख मोहम्मद शहाद, ठीक है। तो वो बहुत सारे उनके पास बड़े जबरदस्त किस्म के ट्रेनर्स और टीचर्स हैं। पढ़ाना है ना कुरान सही तरह सही मानों में, तो जी वो सर। तुम्हें मसरी कारी पढ़ाएंगे। जी सर। मसरी कारी जो पढ़ाते हैं वो कोई नहीं पढ़ा सकता। जी सर। हमें ठीक है कुरान भी सर। उर्दू की तरह पढ़ते हैं, जी ठीक है। सर। जी सर। सर मैंने आज सर मैं आपको बताना था सर, आज मैंने CIS स्टाफ 20 करोड़ शुरू किया है आपका वाला ना कोर्स वाला, तो जी काफी सर उसकी समझ आ रही है, तो सर बड़ा मजा आ रहा है वो पढ़ने में सर, यही बस बताना। अच्छी बात है जिया खान, अब तुम काम करो, अब तुम जल्दी जल्दी जॉब पे लगो, फिर हम आगे जी बात सर। करेंगे, जी सर ठीक बहुत है। शुक्रिया सर। ठीक है, चलें, जी जजाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मैं कल सबसे मुलाकात करूंगा। ये जो सैटरडे का जो सेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, इसमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप annafe.com/events में जाकर इसके लिए रजिस्टर हो सकते हैं। जो पहले रजिस्टर हो चुके हैं पुराने इवेंट्स के लिए हम उनको इनवाइट करेंगे, दे कैन आल्सो ज्वाइन इन एज वेल। और यहाँ पर हम आपको बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, अपडेट करेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें, हमारी एक्रेडिटेशन कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, किधर है,
और किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ है, क्या है, हम किस टाइम पे आपको कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस जो जो है ना आपको मिलती है स्टडीज की ना, वो कब मिलेगी, क्या मिलेगा, सब चीज़ों के जी आई बिलीव सेशन खत्म करते हैं, तो इंशाल्लाह कल फैसल भाई बैठेंगे, तो कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारा 20 अगस्त का जो सेशन है पाकिस्तान के 9 बजे, वो आप ज्वाइन करिएगा। तो इंशाल्लाह कल आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।